this was
प्लेट नहीं है। हाँ नहीं सर बस क्यों मारेंगे कह रहे थे सोमवार हो जाएंगे सोमवार कह रहे थे हाँ हो जाएगी गुड मॉर्निंग अप्रूव हो गया है बस खाते में डाउन हो जाएगा ठीक थैंक यू
उन्होंने वो बिल रिमूव कर दिया कभी करके होगी तो इतना टाइम कोई बात यही मीटिंग वैसे ना वैसे वैसे बैठे हैं क्या कह रहे हो वैसे बैठे हैं आजा Sir, sign. Excuse me, sir. Sign. और टॉपिक कितने रहेगी वो सेट बनाना है क्या इसके साथ में ही आ जाएगा एक सेट हो जाएगा मतलब 3 सेट बनाएगा एनएचएम मतलब 3 मांगे होंगे ना अरे सिर्फ रिपोर्ट और बैलेंस शीट का सेट एक
साथ मेरे को एक एक सेट देखो तो यार तू कहानी में पूछा कर मेरे से जो मैं कहूँ कर दिया कर ये अभी लाइट नहीं है लाइट है अभी यहाँ पे ये आवाज़ आ रही है ये आवाज़ और ये बंद होगा नीचे ये होगा ना ये आउट आउट है वो तेरा हो गया लाइट मोबाइल हो गया वो नीचे से चल ही रहा है उसका लिंक कहाँ है रणवीर को दे दिया रणवीर को दे दिया उन्होंने दे दिया होगा बस बढ़िया आप बताओ कोई नहीं हो जाएगा ओके हाँ हाँ तो जो मर्जी मैं हाँ तुम फ्री होके कर लो ठीक है ओके
मेरे वाला आ गया है क्या? बोला जाएगा बड़ा लगा हेलो हेलो क्या हाल है मनदीप जी? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। मैं बेसमेंट में हूँ, कहीं HRC पंचकुला आया हुआ था। हाँ जी, हाँ। मैं 1:30 या 2 बजे तक खत्म हूँ फिर से जी। नहीं, मैं कल सुबह आऊँगा। हाँ जी, चलो कोई ठीक है जी, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, राइट।
सेशन शुरू करते हैं। हाँ अच्छा हाँ सर जी के हाथ हेलो Morning everyone. I, Ajay Chaudhary, on behalf of Institute of Town Planners India, Haryana Regional Chapter, welcome you all to this workshop on emerging regulatory challenges in town planning in the state. As we all know that with the rapid pace of urbanization and development, there are various regulatory challenges that have emerged. Now, we have kept this workshop to sensitize our young planners especially, who are, some of them are here and some of the planners will be joining through our YouTube link, to sensitize them how should we tackle such regulatory challenges in the state. So before starting the workshop, I thank all of you for appearing in person because that actually encourages the boost of the chapter.
Now to start, I would like to invite our respected seniors, Shri V.K. Goyal ji, member Haryana Gurugram, Shri Nadeem Akhtar ji, member Haryana Panchkula, our retired chief town planners, Shri J.S. Redu, to please come on the stage and start this workshop by lighting the lamp. I also request our chapter chairperson Shri P.P. Singh ji and secretary Shri Lavit ji to please accompany our honorable guest on the stage. Please, sir. It seems that the first row is younger than the people who are sitting on the last rows. Because I cannot hear any round of applause. अगर आप लोग तालियों में कंजूसी करोगे तो हम लंच में करेंगे. Thank you everyone. I request our session chairperson Shri Nadeem Akhtar ji to please be seated, and also our first speaker Shri V.K. Goyal ji, member Haryana Gurugram. As you already know, this workshop will be followed by annual general meeting 2024 of Haryana regional chapter, and that meeting will be followed by the lunch. Now let's talk about this particular session. As I already discussed, that the regulatory challenges in these days, especially the advent or the publication of RERA Act, although they have simplified, but because of the publishing of RERA Act in the recent times, there are some contradictions in the pre and post RERA scenario, which we all are tackling. So our first speaker, Shri V.K. Goyal ji, is going to present his topic, pre and post RERA scenario. So let's welcome. So we'll welcome our first speaker, Shri V.K. Goyal ji, after a small brief by our session chairperson, Shri Nadeem Akhtar ji. Please. Good morning all. First of all, I thank HRC and Mr. P.P. Singh, Chairman HRC, for giving me this opportunity to preside over this session. In fact, I was telling him that you chair the session because you know the new things, new policies, etc., which are being prepared by the Town and Country Planning Department, and their contradictions with the prevailing, with the new act, RERA or other acts. In fact, whenever a act is enacted, it affects the already existing acts at some point of time, and which requires updation of the existing acts, rules, regulations, and the same is the case with RERA also. RERA basically is a central act
which has been enacted by the Parliament, and its implementation is through state governments, and they have formulated their rules to implement the RERA Act. So, as far as Act is concerned, it is constant throughout the country, but as far as rules are concerned, there are large variations in the rules of various states, depending upon their local laws and their uh, level of urban development, problems they are facing, etc. So as far as Haryana is concerned, Haryana is basically a very, you can say, developed state in terms of urbanization, because our urban population is more than the national average, and in case of some of the towns, particularly Gurgaon, the growth rate is highest in the country. So the challenges which are there in Haryana are much larger than the other states, except few developed states like Maharashtra or Gujarat. So this is a good opportunity to see what are the challenges we are facing as far as RERA is concerned, vis-a-vis the existing town planning acts, policies, rules, regulations, etc. So Mr. V.K. Goyal, who is presently member RERA Gurgaon, has worked in the town planning department in all capacities and retired as chief town planner. So he knows the acts of town and country planning department by heart. And further, for the last more than 3 years, he is in RERA. So I think he is the best person to give an overview of the past and present scenarios in the town planning and the effect of RERA on the urban development, and particularly our department. Basically, our focus is how the RERA, coming into RERA, has affected the town country planning department, and what are the changes required, where the conflicts are there in RERA Act and the town planning act, and what changes are required. So I request Goyal Sahab to make his presentation. Very good morning to all of you, and thanks HRC and Sri PP Singh for first of all choosing this very relevant topic, and then giving us an opportunity to present our views before you. In fact, one of the objectives of ITPI, HRC as well as RERA is common. Section 33 of the RERA Act stipulates to spread awareness about the Act, its policies and the rights. Because, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Because RERA impacts you not only in professional capacity but in individual capacity also. सब हम मकान में रहते हैं, यह मकान हमने कभी ना कभी खरीदना है, तो हमारे क्या rights हैं, क्या obligations हैं, उसके बारे में पता होना बहुत ही निहायत जरूरी आवश्यकता है. So, I'll be presenting a scenario on the pre and post RERA, how it has impacted and what changes have had, and what are the conflicting issues which are emerging, and the ways to tackle the same. As we all know that the Act named as
Real Estate Regulation and Development Act 2016. It was enacted with effect from, implemented with effect from 1st May 2016. But the whole of Act was not implemented from that date. Only 69 sections out of 92 sections got implemented, got effective from that date, and remaining sections commenced only after 1 year, 1st May 2017, because the governments had to take various steps to ensure its implementation and compliances by the various promoters. The first interesting thing I was noticing is that our Act, Haryana Urban Areas Development and Regulation Act 75, when it was framed in 75, तो उसकी bracket में भी यही है. लेकिन the focus has changed. Earlier it was development and regulation, but now so much development has happened, and there are various regulatory challenges, and hence in RERA Act, the regulation is the first focus and then the development, but objectives are common. So the Act as was enacted from 1st May 16 and effective from 1st May, all sections operationalized from 1st May 2017. The main prime focus of the Act is ensuring transparency and efficiency in real estate sector. By transparency, it means that as an allotee or a buyer of a unit or plot or flat or commercial unit has right to know in advance what is going to be delivered after a promised date and what will be its specification. That is the right under the Act given to the allottees. And how it promotes efficiency, it indirectly promotes efficiency by fixing the due date of delivery. You cannot earlier what used to happen कि मैं 17 में दूंगा नहीं हुआ तो 2 साल बाद दे दिया. But now you can't do it because the penalties and consequences are very heavy. So one has to be efficient. So the one of the focus was interest of consumers is to be protected, and project has to be completed in a prescribed time framework. And in case of the conflict and disputes, an adjudicating mechanism, a quasi-judicial authority powers have been given to the authority, and the orders of authority are appealable before the appellate tribunal. This is the sequence. It is not a act framed in a hurry. The act has crossed a long journey. It started from 2011 when the Minister of Housing recommended that there should be a law for regulation of the real estate sector. Then a select committee, the bill was prepared. It was referred to a select committee of the Rajya Sabha members. They deliberated, suggested few changes, and ultimately was introduced in the Parliament. After passing of the act, it got implemented with effect from 1/5/2017 with full force. So it's not that before the act in 2016 there were no regulatory mechanism. There were laws which were regulating the urban development, but the focus was on spatial aspect of the or physical aspect of the development. टाउन प्लानिंग ये चेक करेगा कि कंस्ट्रक्शन सेटबैक्स की कोई वायलेशन है या नहीं है, हाइट्स की कोई वायलेशन है नहीं है, परमिशंस है या नहीं है. बट हाउ द बिल्डर इज डीलिंग द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, दैट वाज नॉन ऑफ द बिजनेस. Especially after Manmohan Love case, we used to quote that the director cannot interfere in the individual builder buyer agreement. So there was need to address that gap. So primarily with the introduction of RERA, an adjudicating mechanism has been established to handle builder buyer agreements, ensuring a more comprehensive regulatory framework. Prior to this authority or commencement of this act, person has an option to go to the consumer court or civil courts, but their action was more of a punitive and not punitive, not preventive in nature. Punitive in the sense कि आपने ये violation किया, आप इसको ये compensate करिए, that's all. What happens to the project, what steps needs to be taken so that it doesn't lapse, and there should be continuous monitoring mechanism. That was not part role of the consumer courts, and hence the authority was formed. Pre-RERA scenario was, there were, as we know and we have seen, many promoters took the money for one project, spent that money on the second project, and after some time both got struck up. So there was diversion of funds, there were delayed possessions, agreements were one-sided, like due date.
The due date is given as 1/5/2016, but it was with so many clauses कि अगर वो 3 साल बाद भी दे तो legally you cannot challenge it, because it used to say कि अगर सब मेरा endeavor करूँगा, I will endeavor to hand over the possession by this date. उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, मैंने endeavor किया, नहीं हुआ, what can I do? How I can be penalized? But now with the act, this scenario can't be there. So the agreements have to be pre-approved and there have to be standard agreements. Unequal penalties, वो 5 रुपए स्क्वायर फीट देगा डिले के लिए, बट आपसे 18% या 24% इंटरेस्ट लिया जाएगा फॉर एनी डिले. एक ये सबसे बड़ा इशू जो कॉमन मैन फेस करते थे, सुपर एरिया और कारपेट एरिया. नाउ द बिल्डर हैज टू स्पेसिफाई कारपेट एरिया. Misleading ads थी, no warranty on the workmanship थी, sales before approvals थी. This was mostly the scenario, not necessarily in Haryana, but it is an overall India scenario, because in Haryana our T&C department has been effective from long time back and situation was not that bad. So now in post-RERA scenario the things have changed or are changing. One has to provide very accurate and authentic information about the promoter. More transparency has to be there. Sale has to be on the corporate area basis. You cannot change the plans after the sale. That is a very important issue. And funds has now what happens? जो अकाउंट खोलता है प्रमोटर, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, नॉट प्रमोटर स्पेसिफिक. कि DNF है तो उसका एक अकाउंट में पैसा आएगा, नो. फॉर ईच प्रोजेक्ट नाउ ए बिल्डर हैज टू ओपन ए सेपरेट अकाउंट, एंड वंस द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन दैट अकाउंट, it automatically goes into two heads. One is 30% which he can spend of his choice, and 70% amount can be withdrawn only on certification of 3 persons, CA, architect and engineer, and that account is only for that project, not for the company. Now under section 3 it stipulates that it first makes a registration of the real estate project compulsory with the authority. After obtaining the license, you cannot make any booking, selling or offer of sale without getting the project registered. But the issue came, there were many projects which were already ongoing. Ongoing is where the completion OC is not obtained and possession is not handed over. They also required registration. इनके अंदर सबसे ज़्यादा conflicting issues आ रहे हैं. So while registering the project, these are the requirements which the builder or the promoter, we call it promoter, has to supply. First, the applicability. The registration is required for any project having an area of more than 500 square meter or wherein more than 8 units are proposed to be sold. So there the registration is required. So while going for the registration, all these sites details are uploaded on the website and are available to the general public. Brief detail about the project, authenticated copy of all the approvals, sanction plan, layout plan, specifications, plan of development works, location detail of the project, performa of the allotment letter, agreement for sale and conveyance deed. All these 3 performas have to be uploaded in advance. Earlier what used to happen कि मैंने 10% पैसा दे दिया, फिर 15% दे दिया, तब मेरे को एक एग्रीमेंट दिया गया. But now I can't change. If I want to change, they will say कि आपका पैसा कट जाएगा, ये डिडक्ट कर लिया जाएगा. But now in advance, any person can see in advance what type of agreement I will be required to execute after making the payment, what will be the format of my conveyance deed, and what will be the format of allotment letter. All these are available on the site in advance. Under section 4, every promoter has to make an application for registration, wherein all these details about the number of units, their areas, declarations, up to what date the project is to be completed has to be filed. These are very 2 important sections under section 14. Section 4, 4.2 LC and 4.2 LD. Now 4.2 LC stipulates the builder or the promoter has to file an affidavit declaring the time within which limit he will complete the project. And if there is a violation, it invites penal actions not only from the authority but also from the individual allottees. They can seek delay possession compensation or refund of the amount along with compensation. Section 4.2 ND stipulates need to have a separate account. One account is opened, it automatically gets, the amount gets bifurcated in 2 accounts. 70% goes into RERA account from which
withdrawal is allowed only against that project and on certificate of 3. उसके लिए उसको कोई रेरा से अप्रूवल नहीं चाहिए, बिकॉज एक्ट बनाते हुए देखा गया कि इतना भी इसको स्ट्रिंजेंट नहीं बनाना कि रोज अमाउंट विड्रॉल के लिए रेरा में या किसी अथॉरिटी के पास आए, बट बैंक को एक ड्यूटी दे दी गई कि आपको ये 3 आदमियों का सर्टिफिकेट लेना है, सीए, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, दैट दिस अमाउंट हैज बीन स्पेंट ओनली आफ्टर इट्स स्पेंडिंग द विड्रॉल इज अलाउड. Under section 5 we grant the registration. Under section 6 there is a provision of extension only of 1 year. Section 11 functions and duties of the promoters, it in detail provides what are the obligations of the promoter, and in case of any violation each allotee has a right to seek compensation, delayed interest or penalties by the authority. These are the rights. This is very this affects all of us in one way or other. What are the rights and duties of the allotee? This is the act which provides not only the rights, it also provides certain duties on the allottees as well, so that the project should not get stuck up. The allotee is required to make the payment on time, meaning which he or she is also entitled to pay the interest, then has to take the possession, execute conveyance deed. So a number of rights have been cast upon the allottees. So it is under section 31, it is not only the allotee who can file a complaint with the authority. Promoter or colonizer can also file a complaint against the allotee if there is any non-payment. So this is a short what are the different compliances, brief of the various compliances. The section 42LC I have explained, 42LD. Under section 5 extension of 1 year is allowed. Under section 14 this is the one issue which remains, जो से टाउन प्लानिंग और उससे थोड़ा कंफ्लिक्ट आता है, which needs to be reconciled. The section 14 is very categorical. It states that no variations or changes from the plans which were shown at the time of approval is allowed, except with the consent of 2/3 allottees. So in case there is no consent in town and country planning, we invite objections. If they have filed any objection, again it is the wish of the DTCP to see that objection is valid or not. But under this act, it gives a right to each allotee. It says 2/3 consent, prior and written consent of the. In the word, there is a difference between inviting NOC and consent. The consent has to be prior and it has to be written. So these are different functions and powers of the authorities. There are powers to call for information and conduct investigation. We have powers to issue interim orders also under section 636 in case promoter is threatening with any kind of cancellation, and then there is a recovery mechanism of the amount allowed. So these are different. Now the issue is that it is not that how it will help in growth. I believe personally, हर्षद मेहता कांड हुआ जो उससे पहले शेयर मार्केट बड़ी sluggish होती थी. Once हर्षद मेहता is gone and system, अब ये जो BSE index और इसको एक बार systematize कर दिया, the sector grows. So if there is efficiency and transparency in the sector, it certainly helps the sector to grow, because the idea is the bad fishes should be eliminated and good fishes should be able to survive. So if a builder or promoter in implementing the project is sincere, and then there is no problem, those people should be promoted. And there is, but as Mr. Nadeem, the chairman of the session, explained that there is a need to synchronize the new act with the existing laws, especially on these issues of sanction of the revised plans, because under the act, and our act is parliamentary act, Parliament Act has a overriding effect over State Act. So in that case, a prior consent का जो issue है ये बहुत बड़ा challenge emerge कर रहा है. Especially now with the phasing also, some issues are emerging. Earlier there was no phasing plan, but the department framed a policy that phasing is required and phasing is being approved, and then certain exceptions are also given. And under a section, the government has power to issue some instructions to the RERA. Under those exercising that power, the government in TNCP has issued certain instructions to RERA. We adhere to it, but certain conflicting issues still remains which needs to be addressed. Adhering to the rules and regulations set forth by authority is imperative for fostering the growth of real estate sector, because
Compliance not only ensures transparency and accountability, but also instills confidence among stakeholders. Regulated and transparent real estate sector is always helpful for real estate sector market to develop and grow, because that is, as we all as town planners we know that urbanization, faster urbanization, regulated urbanization is a big help in fostering the economic development of the nation, and hence both the acts, all the acts should work in a very synchronized and regulated way. Thank you, and I am open to any questions. Thank you. Thank you for making a wonderful presentation and giving a brief of their act. In fact, I would just add 2-3 things what Mr. Goel has said. One is the definition of ongoing projects and what is a completed project. As far as RERA is concerned, RERA says that completion certificate आ जाएगा, then a project is complete. Whereas in the department we are giving OCs, we are giving part completions, and the builders जो है वो हमारे पास आते हैं जैसे कि हमें डिपार्टमेंट से OC मिल गया, हमें पार्ट कंप्लीशन मिल गया, तो इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन ये रेरा एक्ट से कंप्लीशन, वर्ड यूज इज कंप्लीशन, एंड इस चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसने भी अब क्लैरिफाई कर दिया है कि जब तक कंप्लीशन नहीं आएगा, एवरी प्रोजेक्ट इज टू बी रजिस्टर्ड विद द रेरा एंड कंटिन्यू टू रजिस्टर. हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें मान लीजिए किसी एक कॉलोनी में 18 वो है टावर्स, पर्टिकुलरली ऑफ ग्रुप हाउसिंग, और 18 के 18 का OC आ गया, लेकिन कंप्लीशन नहीं है. अब हमें प्रॉब्लम आती है कि हमने उसको अगर वो देना है, रजिस्ट्रेशन देनी है, तो किस चीज़ की देंगे, क्योंकि OC आपने सब सारे टावर्स का दे दिया. सिमिलरली एक प्रॉब्लम आई कि जो DDJY है उसमें आप कंप्लीशन इशू करते हैं, लेकिन कुछ फील्ड ऑफिसर्स ने जो कंप्लीशन इशू कराया उसमें से जो कॉमन फैसिलिटीज हैं, जैसे कोई नर्सिंग होम है, कोई स्कूल है, उसको एक्सक्लूड कर दिया. अब हम कह रहे हैं कि भाई लाइसेंस आपका टोटल 5 एकड़ का है, उसमें से स्कूल एंड आपने नर्सिंग होम माइनस कर दिया, उसका आपने कंप्लीशन दिया नहीं, तो वेदर इट इज ऑनगोइंग और इट इज कंप्लीट प्रोजेक्ट. ठीक है. सिमिलरली कुछ DTPs ने ये करा है कि उन्होंने टोटल कंप्लीशन दे दिया है, जिसके अंदर के शॉपिंग सेंटर का भी जो है कंप्लीशन दे रखा है, जबकि शॉपिंग सेंटर के प्लान भी अप्रूव नहीं हुए, उसका स्टैंडर्ड डिजाइन अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसका कंप्लीशन हो गया. तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, तो वो हम कभी रेफर भी करते हैं. मैं बहुत ऑफ एंड ऑन PP सिंह से फोन पे भी बात करता रहता हूँ. तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. दूसरा जो एक बड़ा जो डेवलपर्स करते हैं वो एक बोलते हैं फिट आउट पोजीशन. फिट आउट पोजीशन में वो क्या करते हैं कि जी हमारा कंप्लीशन हो जाएगा अगले 1.5-2 साल में, इतने आपको जो अपने काम कराने आप करा लीजिए, फिट आउट दे देते हैं. अब वेदर दैट फिट आउट पोजीशन की जो डेट है, वेदर दैट इज एक्चुअल पोजीशन डेट और नॉट, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेरा एक्ट कहता है वो लीगली पोजीशन जब माना जाएगा जब आपके यहाँ से उसका कंप्लीशन हो जाएगा और उसका OC ग्रांट हो जाएगा. बिना OC के वो पोजीशन देते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. एक जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉमन एरियाज की. कॉमन एरियाज जो है, जो भी आपने प्रेजेंटेशन भी है जिसमें कि वो रजत जी उस पर करेंगे अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट पे. कॉमन एरियाज अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में कॉमन एरियाज की रजिस्ट्री का कोई प्रोविजन ही नहीं है. वो ये है कि जो उसने डिक्लेरेशन दी उसमें जो उसने कॉमन एरियाज बताए डेवलपर ने, वो तो अलॉटीज के हैं. बाकी जो कॉमन एरिया बचा रह गया वो क्या है और वो किसका है और वो कब उसको ट्रांसफर होगा. तो बहुत सारी एसोसिएशन हमारे पास इसलिए भी आई हुई है RWAs रेरा में कि जी सारा कुछ प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, पिछले 10 साल से ये डेवलप हुआ पड़ा है, पर ये हमें हैंड ओवर नहीं करता. कॉमन एरिया जिसके सारे इसके पास हैं, क्योंकि उसने कॉमन एरिया जो डिक्लेयर कराया वो जो टावर के अंदर कॉमन एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड कॉमन एरिया, वो उसने अपने डीड ऑफ डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करा, बाकी कॉमन एरिया करेगी. तो ये इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हम आज यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे थे. इसका थोड़ा सा एक सोल्यूशन जो है हिमाचल ने निकाला है. हिमाचल ने क्या करा है कि
जितने भी वो प्लान्स अप्रूव करते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें इंटीग्रेटेड हाउसिंग है, तो उसमें वो कॉमन एरिया और जो सेलेबल एरिया है वो प्लान के ऊपर ही लिखवा देते हैं। प्लस वो कारपेट एरिया भी हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक का जो है वो प्लान अप्रूवल से पहले उसको डिक्लेयर करा के प्लान के ऊपर, सेक्शन प्लान के ऊपर ही वो लिख देते हैं कि कारपेट एरिया ये है, ये कॉमन एरियाज हैं। और पर्टिकुलरली उन्होंने क्या करा है कि जो कम्युनिटी सेंटर या क्लब है, इट विल मैंडेटरी भी कॉमन एरिया। वो बहुत सारे जो सोसाइटीज है उसमें क्या करते हैं कि क्लब अलग से है, क्लब मैंने चार्ज ही नहीं करा, बाद में उसकी मेंबरशिप चार्ज करते हैं, आउटसाइड एजेंसीज को वो लीज आउट करते हैं उसको मेंटेनेंस के लिए, उसमें कोई फंक्शन करना तो वी हैव टू पे। तो उन्होंने क्या करा कि जो कम्युनिटी सेंटर या क्लब है दैट इज मैंडेटरी कॉमन एरिया। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज जो हम वैसे भी बाद में भी डिस्कस करेंगे। नाउ थोड़ा और इसको सब्सटेंटिएट करूं। अब लाइक फेजिंग, रिपीजिंग से मेरा लास्ट वीक थोड़ा डिस्कस हो रहा था। सो अब इशू क्या इमर्ज हो रहा है कि फेजिंग इज ओके, नो इशू, कि आज आपने फ्रेश प्रोजेक्ट है वहां फेजिंग कर दिया, तो मुझे दिखाया गया है कि ये 7 फेज में अप्रूव होगा, 7वें फेज में क्लब या स्कूल है विच विल कम इन 2035, नो इशू। मेरे को खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदूंगा। नाउ इशू इज एमर्जिंग कि एग्जिस्टिंग उसमें से 2 पॉकेट्स में बेचा हुआ है, अब थर्ड पॉकेट में या फोर्थ का फेजिंग कर दिया अलग से। अब वो कह रहे हैं कि वहां पहले क्लब या स्कूल था जो चेंज हो गया, उसका फेज अलग कर दिया। सो उस केस में ये बड़ा चैलेंज आ रहा है हमें कि जो एग्जिस्टिंग अलॉटीज हैं किसी पॉकेट के अंदर, अगर इनिशियली अप्रूवल के टाइम when the third party rights were created initially, if any phasing or future development is shown distinctly, no issue. But if in place of that future development some blocks were shown, अब उसको रिवाइज करके TDR या और लेके उसको अवेल करके you are revising, the issue is emerging 2/3 consent as per the act is required only for that phase, not from earlier phase. But earlier phase has a right indirectly because when the unit was sold to him or purchased by him or her, at that time a particular layout plan was shown wherein in this pocket so called now phase 2 or phase 3 was not shown as phase 2 or 3, had certain amenities which have now date has been got extended. एक ही ऐसे ही एक बहुत बड़ा इशू हमें BIP में आ रहा है। नाउ BIP इज एक कॉलोनी है 10 एकड़ की, उसमें 3 ब्लॉक्स मैंने ले लिए, BIP परमिशन ले ली, I have constructed the flat, obtained the OC, handed over. The amenities are to be provided by the main developer who is not coming forward. अब इशू आता है कोर्ट में कि अब इस लैप्स के लिए who is responsible? If we call the promoter or the licensee, he says कि मेरा इस A और B से कोई agreement ही नहीं है, neither I have received any money, nor there is any privity of agreement between two of us, तो मैं responsible नहीं हूँ। VIP person says कि it was known from very beginning कि मेरे को तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन करनी है, OC लेना है, इसको हैंड ओवर करना है, which I have done. अब वाटर सप्लाई क्या होएगी, स्कूल का क्या होएगा, बाकी चीजें पार्क कब डेवलप होएगा, आई डोंट नो, दैट इज नॉट माय बिजनेस। सो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, दीज हैपेंस, नेचुरल कोर्स के अंदर होता ही है, जब कोई ग्रो करता है तो इस चीज के चैलेंजेस हैं, बट वी हैव टू कीप एड्रेसिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू सर। सिंस सर, सिंस कुछ इश्यूज रेज हुए हैं एंड एक्चुअली ये वर्कशॉप का मेन इंटेंशन ही यही था कि आपस में यदि हमारी कोई भी व्यूज़ जो हैं शेयर करें और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो जहाँ तक उसको रिजॉल्व कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले फेजिंग पे आते हैं सर। जो फेजिंग में हम ऐसा कभी नहीं करते, जैसा कि सर आपने बताया कि यदि कोई पहले से ब्लॉक था उसको हटा के वहां पे कुछ और कर दिया, प्रोवाइडेड उस ब्लॉक में ऑलरेडी अलॉटीज थे। यदि शुरू में कोई ऐसा प्लान हमें दिया गया था, सपोज 10 ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए थे और 3 ब्लॉक का ही रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकी 7 के सपोज रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, तो एक ढांचा का प्लान उन्होंने पहले हमारे से अप्रूव करा लिया, बट जब जो रजिस्ट्रेशन करवाया रेरा रजिस्ट्रेशन तो केवल 3 ब्लॉक के करवाया। तो फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पसेस जो वो 3 ब्लॉक के
अलॉटीज हैं, जो भी उनको जिन्होंने भी वहाँ पे अलॉटमेंट किया, जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए, उनकी राइट्स जो हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बाकी साथ में तो कोई है ही नहीं, बाकी साथ तो खाली है। अब होता क्या है कि थोड़े दिन बाद जब वो अगली बार हमारे पास आता है रिवीजन के लिए, तो बोलता है कि भाई टाइम के साथ यहाँ की जो मार्केटेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चेंज हो गई। अब ये जो 7 है, इसको मुझे क्लब करके 2 या 3 बनाना है, ज़्यादा ओपन एरिया रखना है, फैसिलिटीज ज़्यादा क्रिएट करनी है। तो सिंस इन 7 में अभी तक कोई अलॉटी है नहीं, तो हमारी फेजिंग पॉलिसी क्या कहती है? हमारी फेजिंग पॉलिसी ये कहती है कि जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, सपोज उन 3 में से एक का ओसीबी हो गया और 2 एडिशनली उसके रेरा रजिस्ट्रेशन है, अभी ओसी नहीं है, तो जो 3 हैं वो तो फ्रीज हो गए, उनको तो हम बिल्कुल चेंज करने ही नहीं देते। उसमें यदि कोई भी चेंज करना है तो दे नीड 2/3 कंसेंट, रिटन कंसेंट राइटिंग में चाहिए, उसके बगैर कोई चेंज अलाउड नहीं, 100%। तो ऐसा नहीं है कि 2/3 कंसेंट हम नहीं मानते, 2/3 कंसेंट हम जरूर मानते हैं, 100% हमारी फेजिंग पॉलिसी इंसिस्ट करती है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट अलॉटी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। जो उसने देख के बुकिंग की थी और रेरा रजिस्ट्रेशन देख के और बुकिंग करवाई थी, उसके बेसिस पे उन 3 को हम कोई चेंज नहीं करने देंगे। जो बाकी 7 ब्लॉक में एरिया था, जिसको वो सपोज 2 या 3 ब्लॉक में अब क्लब करना चाहता है, कम्युनिटी फैसिलिटी क्रिएट करना चाहता है, व्हाटएवर प्लानिंग ही वांट्स टू डू, इस स्टेज पे जहां भी जब भी वो आता है रिवीजन के लिए, तो उसके पहले, क्योंकि फेजिंग पॉलिसी तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज एग्जिस्ट करती है, तो ही हैज दैट अपॉर्चुनिटी कि अब वो फेजिंग करा ले। अब जब वो फेजिंग कराएगा तो वो जो 3 ब्लॉक्स थे उनको कंपल्सरीली सिंगल कंप्लीटेड रेरा रजिस्टर्ड फेज ही कहना पड़ेगा, उसको उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो 3 तो फ्रीज हो गया। जो बचे हुआ एरिया है उसको 2, 3, 4, 5 जितने फेज में वो दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, क्योंकि अब वो फ्यूचर का है। बट वो भी इसके बाद फ्रीज हो गया, उसके बाद हम उसको फेजिंग प्लान चेंज नहीं करने देंगे अनलेस रेरा अलाउज इट, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद फेजिंग प्लान चेंज करने अप्रूव करने के बाद रेरा में किस हिसाब से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो दैट वे वी आर इंसिस्टिंग फॉर 2/3, जहां डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज इन्वॉल्व है, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे अब सपोज ये जो हमने कहा कि बाकी 7 वाले एरिया को 2 ब्लॉक में मर्ज कर दिया, से कि उसने उसमें 2 ही फेज और लेके आता है, तो अब उसके बाद भी 1 साल बाद डाउन द लाइन सपोज उनमें से किसी एक फेज में वो चेंज करना चाहता है, तो अगेन उस फेज के सभी अलॉटीज से उसको 2/3 कंसेंट लानी पड़ेगी, प्लस पूरे प्रोजेक्ट में फेज 1, 2, 3 जितने भी हैं सभी से ऑब्जेक्शन सजेशंस इनवाइट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्शन सजेशंस लोगों की हो सकती हैं कि मेरे को शो तो ये किया गया था, डिलीवर ये किया जा रहा है, तो दैट ऑब्जेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। मुद्दा केवल ये आता है कि ऑब्जेक्शन हमारे पास ये आता है कि जी इंटरेस्ट कितना लगा दिया, हमारी पानी सुबह से शाम तक 2 घंटे आती है, जिसमें कि हमारा कोई रोल नहीं है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल या अमेंडमेंट का कोई रोल नहीं है। तो दोज ऑब्जेक्शंस ऑब्वियसली कांट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। तो 2/3 consent, in spite of phasing, we are considering it sacrosanct, but at the same time, किसी भी अलॉटी को, यदि मैं अलॉटी हूं, तो मेरे पास ऐसा टूल नहीं होना चाहिए कि मैं ब्लैकमेल कर सकूं बिल्डर को या किसी और को, और आई कैन होल्ड द एंटायर प्रोजेक्ट हॉस्टेज टू माय विम्स एंड फैंसीज। तो आई बिलीव जो भी फेजिंग पॉलिसी आई है, इट इज सो वेल बैलेंस्ड कि अभी तक आई डोंट नोटिस कि एनी लिटिगेशंस कोई हैं इसके बारे में। आई डोंट थिंक देयर आर एनी लिटिगेशंस एज सच। तो और ऑब्वियसली लिटिगेशंस आर द टेस्ट ऑफ एनी सच पॉलिसी और एनी सच लेजिस्लेशन। तो जिस दिन आएगी उस दिन वो भी टेस्ट हो जाएगा, बट अभी तक मोर और लेस
मुझे लगता है 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, and it has been going on very well, and it creates a very balance between the rights of allottees and the rights of the developer. Rights of developer मतलब हर developer को या promoter को हमें गुंडा डिक्लेयर करके और उसको मतलब डेमोनाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग अ वेरी वैलिड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, हाउसिंग सप्लाई कर रहे हैं. तो वो बैलेंस यदि मेंटेन ना हो तो हमने देखा है कि वी हैव इनफ एग्जांपल्स जहां पे कि अलॉटीज भी ब्लैकमेल करते हैं प्रोमोटर्स को. तो एक ये था सर जो कि थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. और बट और जो हाँ जी सर. The first phase. हाँ जी सर. You have freeze the first phase after the RERA has approved it. First phase means नहीं हम फेजिंग मैंडेट स्टैट्यूटरी 3 blocks which the RERA has given permission, they have been freezed. बिल्कुल सर. You are going for the another phase. In बिल्कुल. that phase, you are providing a building that is say 20 stories. हाँ जी सर. Whereas the first phase they are only 5-6 stories. हाँ. Are you taking care of their light, ventilation and privacy? सर हम उनसे जो फेज 1 वाले हैं उनसे ऑब्जेक्शन सजेशंस इनवाइट करते हैं. जब जो लाइट एंड वेंटिलेशन और प्राइवेसी की जो नॉर्म्स हैं हमारे बिल्डिंग कोड में दी हुई हैं कि 2 मैक्सिमम हाइट के बीच में 16 मीटर से कम हो नहीं सकता. तो जब कानून कहता है कि यदि 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच में 16 मीटर के डिस्टेंस पे लाइट एंड वेंटिलेशन इज टेकन केयर ऑफ, तो मेरी विम्स एंड फैंसीज ये तो हो नहीं सकती कि जी 16 के बजाय इसको 45 किया जाए. और यदि मैं कहता हूं तो मेरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है. तो व्हाई शुड द गवर्नमेंट अग्री टू दैट? विम्स एंड फैंसीज नहीं चलनी चाहिए सर. किसी की जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस 100% मैंडेटेड होनी चाहिए. मैं इसमें बस एक मिनट क्लैरिफाई कर दूं. पहली बात तो पीपी सिंह जी ये है, इसमें विम एंड फैंसी वो बी नो एक्ट बनाते हुए उन्होंने सोचा कि इंडिविजुअल्स होते हैं, कई हमारे पास भी आते हैं जिसको लड़ने में ही मजा आता है, उसको कोई फ्लैट से मतलब नहीं है. हमें भी समझ आता है कि इसको लड़ने में ही मजा आ रहा है, इसने यही काम करना है, इतनी मोटी कर दी है. लेकिन इसलिए एक्ट में 100% कॉन्सेंट नहीं कहा गया है. सोच समझ के 2/3 रखा कि एटलीस्ट द मेजोरिटी शुड फील कि इट इज ए बेटर चेंज. नंबर 1. नंबर 2, माय डियर सर, द इशू इज कि बेटर क्या है वो एक सब्जेक्टिव चीज है. मैंने पैसा लगाया है इंडिविजुअली, मेरा राइट है देखना कि ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, नॉट फॉर एनीबडी एल्स. इट इज अ मैटर ऑफ राइट्स. द एक्ट गिव्स ए राइट टू देम कि जी आपको अब जो आपने कहा ना 3 में से बेचा हुआ था, शुरू में 10 दिखाए हुए थे, उन 7 में जो चेंज करो कहते हैं जी मैंने तो 10 के 10 इस शेप में देख के लिया था, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को और आपको, लेकिन इंडिविजुअली हैज ए राइट अंडर द एक्ट कि आपने ये चेंज कैसे कर दिया. फेजिंग एज इट इज शेप में आप कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा. बिल्डर कर सकता है कि मैं ये ऐसे ऐसे बनाऊंगा इसको, लेकिन उसको चेंज करके बनाऊंगा वो उसको राइट नहीं मिलता है अंडर द एक्ट. इट इज नॉट मैटर ऑफ मी और यू, इट इज मैटर ऑफ द अलॉटी. उसके कुछ राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं इसमें, और उस जो आपकी ब्लैकमेलिंग वाली चीज को चेक करने के लिए ही 2/3 का राइट दिया गया है, नॉट 100%. ये एक बंदा ही होता है ब्लैकमेलिंग वाला. यदि हजार डिस्कस ऑन टी. ठीक, थैंक यू सर. बात करते हैं हमने ग्रुप हाउसिंग में तो रख दिया, अभी भी जैसे हमने अपने रूल्स में एचबीसी में भी अमेंडमेंट की है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए और एक एजेंसी के लिए जो वो रखेगी. परंतु जो प्लॉटेड कॉलोनीज हैं उसके अंदर हमने कोई भी रेगुलेटरी, अब जैसे सर्विसेज ले डाउन करता है, सर्विसेज ले डाउन करने के लिए हम जब कंप्लीशन पे आता है तो हम सिर्फ उधर से रिपोर्ट मांग लेते हैं कि क्या सर्विसेज ने की स्पेसिफिकेशन मुताबिक डाल दी है अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड सर्विस प्लान एस्टिमेट. बट इंटरमीडिएट कोई भी उसकी चेक नहीं है, चाहे मर्जी वो डाल दे, किस मर्जी स्पेसिफिकेशन का डाल दे, जब वो ढक जाता है उसके बाद क्या उसने हुड्डा ने देखना है, क्या किसने देखना है. तो मेरा तो सजेशन ये है कि बीच में भी उसको चेक करने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन हो, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का बंदा भी हो, हुड्डा का भी हो, ताकि उसकी क्वालिटी चेक हो सके. क्योंकि ऐसा जो ये 5-5 एकड़ की कॉलोनियां बन रही हैं, ये एक ऐसा जब आप टाइम आ जाएगा 5-4 साल बाद हम देखेंगे कि बहुत ही स्लम क्रिएट हो जाएंगे अगर हमने इसके ऊपर चेक नहीं रखा, क्योंकि बहुत ही पुअर क्वालिटी का मटेरियल और
ठीक है वंशी साहब, जिसने साइन करे ना वो हमेशा जब तक है ना जिंदा है, जब तक वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो वैसे भी एक्ट में है ना एक राइट दिया हुआ है तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए पर्सन कैन मूव इन फॉर कंपनसेशन इंडिविजुअली, नहीं सर्विसेज के लिए भी है। सेक्शन 14 में इट इज नॉट ओनली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज आल्सो, कि मेरे को स्पेसिफिक, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन से पहले एक बड़ा आता है बिल्डर से, ये नक्शे पास हो गए, सर्विस एस्टीमेट की क्या जरूरत है, चाहे वो कोई ना देखे अलॉटी, लेकिन ये राइट टू नो कि इसमें फुटपाथ कितना होएगा, इसमें बर्म कितनी होएगी, कितना क्या क्या डालेंगे, उसको राइट है चेक करने का। सर वो परज्यूम नहीं कर सकते ना, ये तो जब वोटिंग राइट दिया गया 1950 में जब संविधान बना तब भी यही सोचा गया था ये तो पढ़े लिखों को राइट देना चाहिए, अनपढ़ आदमी क्यों दे रहे हो, फिर ये सोचा गया नहीं हर आदमी का राइट है वो दिया गया, तो इसलिए हम परज्यूम नहीं कर सकते, हर आदमी अवेयर है, यू कैन नॉट इमेजिन, किसी दिन आके कोर्ट में देखिए कितनी अवेयरनेस है, तो सब चीजें प्लीज। सर मेरा जस्ट जनरल एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे सर ने कहा कि मानो कोई अलॉटी पैसा नहीं देता है तो कोई बिल्डर या प्रमोटर उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाता है, रेरा में आता है, तो ऐसे होते हैं क्या सर? कैसे मतलब 5% 2-3%। तो हाउ यू मीन हाउ रेरा टैकल्स इट? वो बोलता है जी मेरी तो नौकरी छूट गई, अब तो मैं दे ही नहीं सकता, बाद में मैं दूंगा। हाँ, उसमें क्या होता है कि किसी दिन पहले तो उसको सॉरी पहले उसको मौका देते हैं कि आप ये इंस्टॉलमेंट विद इक्विटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दें। कई बार डिस्प्यूट क्या होता है कि जी मेरा ड्यू तो बनता है 25 लाख, ये मांग रहे हैं मेरे से 37 लाख, इंटरेस्ट 18% लगा रखा है, या ये कंस्ट्रक्शन स्टेज पे नहीं पहुंचे उससे पहले डिमांड कर लिया, वो इश्यूज रिजोल्व करके वी कम टू ए कंक्लूजन कि हाँ इतना अमाउंट आप पे ड्यू है, तो एक इक्विटेबल इंटरेस्ट रेट है कि आपको आप जो MCLR प्लस 2% जो करंटली 10.85% पे आप इसको दे दें। एक मौका दिया सुन के कि आप उसको 30 डेज का टाइम दे देते हैं कि यू क्लियर दिस अमाउंट इन 30 डेज, फेलिंग विच उसको राइट दे देते हैं कि आप इसका पैसे कैंसिल कर दो, 10% काट के इसके पैसे वापस करो। 10% ऑफ द टोटल अमाउंट? ओ हाँ, टोटल कंसीडरेशन अमाउंट। सर एक और बात, ये रेरा की राइडिंग है स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन में, बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, तो क्या जो लैंड आउट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो क्या किसी भी प्रमोटर को क्या कोई ऐसा भी ऑर्डर पास करते हैं कि उसकी लैंड को बेच के और उसका जो अलॉटेज का कंपनसेशन दे सकते हैं? नहीं वो है, वो मैं अच्छा सवाल है आपका, दो चीजें क्लियर कर दूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, आई होप यू आर विद इन द टाइम लिमिट, व्हाट हैपेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 लिस्ट है ना, एक यूनियन लिस्ट है जिसमें पार्लियामेंट ही लेजिस्लेट कर सकती है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये जो कानून है ये कॉन्करेंट लिस्ट में बना है और लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए उस पर नहीं बन सकता, कॉन्करेंट में सहमति से बन सकता है, सबकी सहमति, इसलिए कोई और कोई है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे उस सेक्शन में कॉन्करेंट लिस्ट के ये एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट द्वारा। सो एक्ट में मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा क्या है कि हम कोई, मैं लोगों को कहीं क्लियर करता है तो कि जी आप तो काउंटर ने ये सैंक्शन किया है ये बेटर, मैं नहीं, हमें वो नहीं देखना, वी आर नॉट ए सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वी आर ओनली ए रजिस्टरिंग अथॉरिटी। आपने गलत पास किया हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, नाइदर इट इज आवर जॉब टू स्क्रूटनाइज, ओसी गलत दे दिया, रोज आते हैं कि जी गलत दे दिया, वहाँ कुछ नहीं बनाया है, दैट इज नॉट आवर जॉब। देन यू गो टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसकी अपील फाइल करें, विजिलेंस में जाएं, कहीं जाएं, तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पावर है उसमें, कोर्ट की पावर है, सिविल कोर्ट की फॉर लिमिटेड पर्पस। तो जब एग्जीक्यूशन में जब केस आता है तो वी बिकम सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट में जब 2 आदमियों का क्या राइट है उसको डिटरमिन करना है किताब में क्या लिखा हुआ है, नॉट दैट कि क्या होना चाहिए। कई बार किसी बंदा को चोरी करता है, बच्चा पकड़ा गया, आपको लगता है बेचारा भूखा मर रहा था, एक ब्रेड चुरा लिया, क्या जुर्म कर दिया, पर्सनली फ्रॉम हार्ट यू फील, बट नो यू हैव टू पेनलाइज बिकॉज उसने ट्रेस पास किया है, थेफ्ट किया है, ये सेक्शन है, लाइटर पनिशमेंट दे देंगे। तो कोर्ट की भी पावर है, और कोर्ट की पावर जब एग्जीक्यूट करते हैं, और एक फिर एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू की है, तो उसमें उसकी लैंड को उसको रिकवर करने का, और हम करते हैं अटैच बैंक अकाउंट का, तो बहुत ही करते हैं कि ये बैंक को डायरेक्शन देते हैं कि इतना अमाउंट का डीडी या तो इस बंदे को दे दो, नहीं तो हमें भेज दो, हम इसको दे देंगे कोर्ट में। इट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली। थैंक यू। सो मोटो ऑब्लिजेंस जो वाला जो उसमें क्या करते हैं कभी सो मोटो नहीं, सुओ मोटो में तो वायलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन है, और बाकी जो है वो कोर्ट में आएंगी इंडिविजुअल्स की, कि आप अलॉटी थे, बिल्डर ने ये कर दिया, या बिल्डर कह रहा है इसने ये कर दिया, वो आएंगी, वो इंडिविजुअल कोर्ट में आ गई, और सुओ मोटो आ गई वायलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ एनी। थैंक यू सर। थैंक यू, ये बड़ा लाइवली हमारा डिस्कशन था और इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे आफ्टर, बिकॉज अभी हमारे 2 प्रेजेंटेशंस और हैं, इसलिए मैं बीच में रोक रहा था, बट
but we will continue with this discussion. और informally भी हम कर सकते हैं क्योंकि we all are dealing with urban development. तो उसमें जो भी अच्छे suggestions हैं, जो भी हैं, अपने आप incorporate करके, in fact, for your information, रेरा एक्ट में भी amendments के वो चल रहे हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे talks चल रही हैं, discussions हो रहे हैं, कमेटी बनी हुई है कि जो स्टेट लॉज हैं और इससे क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतने साल में जो हो रही है. तो अगर कोई सजेशंस हैं तो हम वहाँ पे भी भेज सकते हैं कि रेरा में क्या अमेंडमेंट करनी चाहिए. वी आर नॉट सेइंग कि सारा कुछ जो स्टेट है उन्होंने ही करना है. अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो हम उसमें भी चेंज के लिए भी कर सकते हैं. नाउ आई कॉल अपॉन रजत चौहान. ये मैनी ऑफ यू नो आपके डिपार्टमेंट की ATP साहब हैं, एंड ही विल स्पीक ऑन दी अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लैंड पूलिंग लेजिस्लेशन. क्योंकि जब से हमारा लैंड एक्विजिशन न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, आई थिंक पूरे इंडिया में ही कहीं लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही है. तो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ लैंड एक्विजिशन क्या है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और जो अथॉरिटीज हैं डेवलपमेंट की, वो उस पर ध्यान दे रही है. लैंड पूलिंग इज वन ऑफ देम. सो रजत. Hello, good afternoon everybody. So very rightly sir has said that after the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, everybody is facing, the agencies are facing difficulties for acquisition of land, for the provisioning of infrastructure in the cities, and the pace of rapid urbanization is moving so fast that we can't wait for something to happen to create something very new when we already have land pooling, and some of the states are doing very good in this. We as Haryana is also doing land pooling, but in bits and pieces, not exactly as a statute. That is why I'll be speaking upon the land pooling legislation, a common land pooling legislation for the state. So very briefly I'll go through this presentation. I'll be speaking about the overview scenario of urbanization in Haryana. Then we'll talk about the existing practices happening in the state, and followed by the Urban Development Act planning situations. Then what we are proposing as a state, that a legislation should be there for the whole of the state without being specific to any particular department. While we already have certain policies which are specific to say XSVP maybe, and then there are multiplicities of agencies which have different jurisdiction in different areas. Lastly, we'll see the brief of the sections, the brief of the act, how many sections it has, how many chapters it will be having. So I'll go through it. So very briefly, we have 532 number of control area and 29, almost 30% of our state is urbanizable. This is a 2011 census data, and you can see that the growth of urbanization is maximum towards the north and the south of the state. Well, this is a comparison of 20 years of the data, how we have moved as compared to the different state of the country. Starting with the Haryana, initially as you can see in yellow color, this is of 1991, followed by the data from 2001 and 2011. So initially I just said that there are different agencies which are already doing land pooling or a similar kind of practice. Different agencies, I'll be explaining, like urban local bodies within the jurisdiction of municipal limits. They are approving town planning schemes which are particular to the area, having a different kind of land pooling practice. Then we have HSVP, Haryana Shahri Vikas Pradhikaran. They have a land pooling policy which came in 2022. That is specifically for residential commercial purposes, which also includes some of the acquisition and disposal for the purposes of residential and commercial areas. When we, as a town planning department, we have TDR, transferable development right, and in addition to that, for each and every licensed colony, it is mandated that every road which is a part of sectoral road, internal circulation road, has to be transferred to the government. But we also face situations where we have certain patches which are not being either required nor being developed. Since there are 24-meter roads, internal circulation road in every sector, most of the time we see when there is a gap between two
IIDC, that is industrial estate, are acquiring for development of industrial areas. They have land partnership policy which came in 2022, 13th of December 2022. They also have portals like eBhoomi, where you can the aggregation of lands can be done online, and there are practices where the farmers can voluntarily apply for a bigger project, or the agencies like IDC, they float for the requirement and they can apply for it. Apart from that, development agencies such as GMDA, FMDA, Panchkula Metropolitan Development Authority and so on, they have provisions in the Act itself for the acquisition of infrastructure projects only, for the laying of major roads, major pipelines of sewage and water supply. So these are the things through which we as a state are already doing this. However, we lack a common uniform statute, a legal backing for handling situations which are over the control of policies which are limited to a particular department only. Again, we as town planning department, we provide licenses to private colonizers, and initially for the purpose of residential development in Haryana, HSVP used to acquire land with the help of Urban State Department, and here is a comparative analysis up to 2024, this year only, and since and on the parity we have a data of 2016 where HSVP has acquired land, and we can say there is a large difference. We are continuously licensing throughout the state, and we have till date granted 2500 odd number of licenses, which caters to 44, almost 45,000 acres of land. And in parity with the same, HSVP has acquired 74,000 acres of land, and these are the individual district-wise data also for the same. When we speak of development of urbanization in the state, there is a particular need that after the commencement of this act, the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, there is a clause of mandatory consent for the acquisition of land. Well, there is a very big need because, as I initially said, there are benches which are not being acquired, which are either litigated, which are not completed for various reasons of ownership, dispute of land revenue records and what else. So, for the acquisition of land for the purposes of infrastructure, it is very crucial to have a legislation, a common legislation for the state. There is an increasing land value and a huge deficiency of land to meet for the infrastructure needs. This gap is ever increasing. The land prices value are very high, and nobody is willing to give the land for the provisioning of infrastructure, basic infrastructure. The third is there is no voluntary participation, of course. And then planning and development by different agencies. We have multiplicities of agencies within our towns. We have municipal limits, we have municipal areas, then outside that we have parallelly at a par, we have development agencies like GMDA, FMDA for the provisioning of infrastructures. We have private players also, private builders who are working for this. And there is no tool to engage public also. Public is not aware what is happening, how will it happen, how will the services be laid, and there is no particular plan also to execute the services in the development itself. And that's why we need a legislative platform to address all these issues, to address the disputes, to address, to enhance public participation in the same. So, next is the proposed act. The state is proposing this act, a common act for the state, which will be very comprehensive and inclusive, which will address to the provisioning and augmentation of urban infrastructure. Post-centric approach will be taken, and a transparent system for the compensation of the acquisition processes. Earmarking of the special provision of community infrastructure, and for the marginal groups of the society, that is EWS also. A very important thing in this is the stakeholder participation and transparent decision making will be there also. And above all, a dispute redressal mechanism for itself related to the acquisition proceeding only. So, in this act, owner, a group of people or a competent authority on
under whose jurisdiction a scheme is proposed to be developed, a project is to be proposed to be executed, any infrastructure proposed, the project is to be developed, they can apply for it. And then second is ownership and beneficiary record of the land, showing the statement of the owners, the details of the project. Third is accountabilities of the authorities to deliver the infrastructure. For this we have a basic time limit, like initially in the Land Acquisition Act there is a particular time limit for everything, for delineation of the project. Then there is section 4, the time limit for section 4, there is a particular time limit for section 6, acquisition and award. Similarly on the same lines, this act has been planned. Then there is duration of course, and blue-green infrastructure, a very crucial part of the town. Blue-green infrastructure will be adhere to strict norms for its provisioning. So these are the same things. So this is a timeline. This is a basic timeline, a broad timeline. The delineation of the intention of the prepare of local plan of the scheme, declaration and purpose of the scheme. That sanction should be obtained from the government in a period of 21 days. Then the draft of the scheme for the purpose of inviting objection and suggestion from all stakeholders of the society. Awareness drive shall be carried out to make this a public participation more, to enhance more public participation in this. And there is a provision for filing of objection for the same. That period is initially been set up for 9 months, which can be expendable depending upon the scale of the project. Third is the government to sanction the draft scheme. When all of this is done, there has to be a draft which has to be sanctioned by the government within a period of another 90 days. Then a particular post is land pooling officer for a purpose of the specific project should be appointed by the government, who shall be looking after this whole process, who shall be issuing directions, who shall be making dispute redressal meetings, and who shall be specific to a project that has to be executed by the government, or in case any public project is being executed, he shall look out after it. Last is preliminary and final submission of the scheme. After doing the above steps, we have a physical determination of the area of the scheme, for which the cost factors, the plot, the schemes, the stakeholder participation, everything is taken into account. Then this is also sanctioned by this is then submitted to the government within a period of 12 months, which may be extended for 6 more months, but not more than 24 months. So the proposed legislation, these slides will be showing the proposed legislation, the act itself, the broad outline of the chapters, and the broad outline of the sections within the chapter. So it has 9 chapters. We start with the preliminary definitions and the short title. It's a very important thing. Second is appropriate authority for delineation of any town planning scheme for a local area plan. For execution of any infrastructure project, we need to have an appropriate authority. Let me cater to that. Third is land pooling schemes, which are on the demand of owners or on the basis of the government requirements. Next is the contents of land pooling scheme, the draft, the reconstitution of plot. This is basically the delineation of the area where it is proposed to be happening. The contents of land pooling schemes, making it public for inviting objection and suggestions, and then power of the states to comment and to finalize the draft scheme. The details of the land vesting in the appropriate authorities after this is done. Appointment of land pooling officers, duties and roles of land pooling officers. Content of the preliminary and final schemes. These are the whole details. These are the sections which will have the details of each and every title. Then matter pertaining to appeal in case of any dispute, in case of any objection which is not being handled, there could be a appeal mechanism. There is an appeal mechanism also, and then there are certain powers of land pooling officer to address the issues. Submission of preliminary schemes and final schemes to the state government for its sanctioning. In case something goes wrong, in case the project is not viable or the requirement of the agency is changed, there is a mechanism to withdraw the scheme also. Appropriation of cost, the cost analysis of the scheme, effective and preliminary submission of the same. Variation, if any, due to the ground surveys,
identification of owners and beneficiary, constitution of association of owners which will be a part of the whole process. In case there is any objection and suggestions to it, they can be a part of it, then they can oversee what is happening. Then finances, a basic calculation of the project itself, the cost included, the contribution towards the cost, the dispersion of funds, the payments, the accounts, then compensation also, and offence and penalties if any. Lastly, this is a miscellaneous chapter which will deal to any of the other things which have been not incorporated in the above 8 chapters, which will have the power of the states, appointment of land record officers, because there is a lot of detailing in the land. When we aggregate a land for a particular scheme, the ownership rights have been changed and a new owner is being designated in case it is a agency. Then the powers of the government and then opens by the companies, members of the officers, public servants to be a part of it, maintenance and accessibilities of the documents, and this is about it. Lastly, it will also have a record of right of land, grievance redressal to it, powers to issue guidance, powers to decide the disputes, powers to make policies under it as required from time to time based on the project, powers to make regulations, powers to make rules, reappeal and savings. That's it. थैंक यू रजत। आपने बस इसका भी लेटेस्ट स्टेज क्या है वो नहीं बताया, वो और बताते हैं आप कि कहाँ पर है, किस स्टेज पे है। This is being submitted to the government for decision after election. Being submitted. Yes, sir. This was earlier submitted, but it is under. Sir, basically we had started this exercise because वो urban reforms में भारत सरकार ने बोला कि हम 150 करोड़ देंगे, आप बस कानून बना दो। तो हमने कानून बना दिया, बट सरकार की तरफ से ये था कि 150 करोड़ हमारे लिए क्या है। सरकार का बजट है हमारा 2 लाख करोड़ का, कि आप 150 करोड़ के चक्कर में, कानून के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो वी आर स्टिल पुशिंग फॉर इट, वी आर स्टिल नॉट श्योर कि इसका होगा क्या, बट हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि इसको, क्योंकि जो हमारा 24 मीटर रोड का जो प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है उसका सोल्यूशन इसके बगैर है नहीं। जहाँ पे भी 24 मीटर की, अब जैसे 58 to 67 की बात करें तो 1000 एकड़ ज़मीन है 24 मीटर रोड के अंदर, उसमें से 500 एकड़ का लगभग लाइसेंस हो गया। अब हमारी 2 साल से टीडीआर पॉलिसी चल रही है, मुश्किल से 20 एकड़ का टीडीआर हुआ उस 500 एकड़ में। तो इस स्पीड से तो हम कहीं पहुंच नहीं सकते। जब तक उसको हम ऐसे किसी लेजिस्लेशन के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो होपफुली ये कंसर्न वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट एंड कन्विंस देम दैट वी नीड दिस, एंड इवेंचुअली होपफुली इट विल सी द लाइट ऑफ द डे। थैंक यू सर, इसमें लैंड पूलिंग पे वी हैव बीन वर्किंग ऑन लैंड। Introduce yourself, please. Yes. So myself, Mumra. I'm an urban planner from SP Delhi. Right now I'm working with MAS. Before in hand I was working with KPMG and KNY. Sir, इसमें as sir rightly said that ring road बनाने के लिए majorly land pooling. They devise land pooling to bring out the ring road and after especially the Bhujar. Hyderabad also is doing exactly the same. एक इसमें जो burning issue सर हमें एज ए ऑन फील्ड जो सामने आ रहा है कि पटवारी के पास हमारे पास लैंड ओनरशिप होती है, उसका दे आर रिवाइजिंग इट आफ्टर एवरी 5 इयर्स। जो पब्लिक डोमेन में है, जो अथॉरिटीज के पास ओनरशिप है, वो 5 साल की बात, नकल जो है नकल 2020-21 की है, उसके बाद की नकल ही नहीं हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में आ रही। 20-21 के बाद का अब जब हम ड्राफ्ट निकालेंगे उसमें निकालते हैं ओनरशिप का, तो उसमें इश्यूज आते हैं। तो ये बीच का गैप फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? 20-21 की ओनरशिप का जो गैप आ रहा है, पब्लिक कंसल्टेशन वाला पार्ट है वो फुलफिल करता है ना, जो हमने 6 महीने का रखा हुआ है, जिसमें कि जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं वो आप पब्लिक कंसल्टेशन रखो। जैसे ये हॉल है, आपने इसमें रख दिया कि अगले 1 महीने तक लोग आ सकते हैं, और जो भी यहाँ पे 2 ऑफिसर्स होंगे जिनकी भी यदि कोई लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो अपना डिस्प्यूट रेज करें, और यदि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो दैट विल गेट एड्रेस। सो दैट्स मेड अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट कि ये स्टैट्यूटरीली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एड्रेस करना, और पब्लिक के पास ये अपॉर्चुनिटी है।
कि वो अपना इस तरह का ऑब्जेक्शन फाइल करे। सर लेना नहीं कर देगा प्रोसेस में। और ऑप्शन क्या है? इसमें जो डेडेंटी होती है ये तो डेली बेसिस पे संबंध में लास्ट स्टिल आप लोगों को क्योंकि वो रेड एंट्री होने में टाइम लगता है। कितना ऐसा हो सकता है पिछली रात को ही चेंज हुआ हो, दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज ए प्रोविजन ऑफ पब्लिक ऑब्जेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। उसका आइडिया यही हो सकता होता है। अब चाहे 3 महीने पहले भी अपडेट हुआ हो, लेकिन हो सकता है कल शाम को ही हुआ हो मेरा राइट चेंज हो गया। थोड़ा सा लेंथी कर देंगे सर। नहीं लेंथी नहीं, और कोई तरीका नहीं होता। दिस इज द ओनली वे। एनुअली मेंटेन करें डाटा। नहीं डाटा कितना ही हो, बट यू हैव टू करोगे तो वो डोमेन में डालना ही पड़ेगा। हो गया उसका क्या करोगे? टाइम कम कर देगा ना डिस्कशन। चलो एक बार लेजिस्लेशन आगे तो बढ़े, फाइन ट्यून करने की अपॉर्चुनिटी तो हमेशा अवेलेबल है। और कोई किसी की कोई ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चन? Now I invite Yajan Chaudhary. He is also assistant town planner and very active person of the HRC also. He will speak on Apartment Ownership Act. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Again, I know we all are waiting for the lunch. We have already crossed. We already have crossed the time of the presentations, and we do have to have the meeting also. So, before my topic, Apartment Ownership Act, which I try to keep it as a conversation rather than a lecture on its need, comprehension, and reforms. But before my topic, I'll talk about lunch, because that is my core interest. Now, I'm sure you all are seeing on this, watching the screen. When we imagine a meal or a lunch, for example, a cake or a pudding, it is always with raisins, nuts, everything. So this is how we dream about a commodity or a project. But sometimes the reality hits hard, and we expect this, and we get this in reality. So the commodity that was sold, the dreams that were sold, the commodity is the same. So we got the commodity, but that commodity is not in such form and shape as it was promised. So you got the project, but that project is not as looks as fancy as it was dreamt of or as it was sold to you. And this reality is sometimes even more cruel in the real estate sector. On the left hand side, you have an image of an expectation of your dream house, which the developer may have sold you, uh, marking a huge open space in front of that and parking, etc. But in reality, you might not get the same product. Now, the fundamental question is, how come the developers successfully sell us expectations which they are not going to deliver? I have forgot to mention the not in the fundamental question. This is the level of optimism every flat buyer has. So, why it happens? वो हमको ऐसे सपने कैसे बेच देते हैं जो वो कभी डिलीवर नहीं करने वाले? It happens because we don't know legal rights in the property. सपना क्या दिखाया और डिलीवर क्या होगा, इसके बीच का जो गैप है, वो गैप हमें कभी बताया नहीं जाता. हमें माने कोई भी एक जनरल होम बायर, most of us must be knowing कि deed of declaration क्या होता है, बिल्डर को क्या बताना है, but a general home buyer who is not that technically equipped as all of our learned audience is. So उनको कैसे पता चलेगा कि उनके legal rights क्या हैं? Now, do we have a solution? The possible solution is Apartment Ownership Act. Now, fundamentally we have understood this act or this document is something which is going to tell a developer, or the provisions of this act are going to tell a lottee or a prospective buyer that what are going to be the rights of that particular lottee in a project that has been promised to him in wherein he has purchased a flat or a unit, right? So it is an act to provide for the ownership of an individual apartment
in a building and to make such apartments heritable and a transferable property. Now, this act deals with the rules and regulations that govern how how the sale of the apartment should take place. Now, once the sale part is done, it will tell the rights which are available to the purchaser or residents of that property or apartment. Now, what comes in that rights? There are different spaces in a project or a colony wherein there are spaces like common areas and facilities wherein there is interest of every allottee. And as our first speaker in detail has already explained what are the common areas, so I will not again go into the details. Now, once we know what are such areas wherein interest of allottee lies, undivided interest lies, then it also talks about the formation of association of apartment owners so that they can undertake the maintenance and management of such areas and much more obviously. Since we are talking about the regulatory challenges in the state of Haryana, so now we'll focus on the Haryana's Ownership Act only. It was enacted in 1983. We'll quickly go through the key features. The first is ownership, heritability and transferability. As we already just discussed that it grants owners right. And which right? Right to ownership, transferability and heritability. It means the apartment can be unit can be sold, it can be transferred or it can be inherited also. Then interest in common areas. The common areas as we have just talked about and facilities of the property based on the apartment's value. Then formation of association of apartment owners. All the owners could form an association to maintain and manage the common areas and facilities. Then it also talks about the encumbrances on the apartments. Apartment owners could create encumbrances on apartments including taking loans or mortgages. Then the last key feature is regulation of association of apartment owners. The act regulates the function of such association to ensure that they work effectively for benefit of all the members. Now we have understood that it is needed. Then we understood that what is the basic comprehension of the prevailing act. But do we need any reforms in that? And why do we need such reforms? As our first speaker talked about the pre-RERA scenario and post-RERA scenario. So the RERA has come into the place. It has comparatively it has detailed out the definitions of the common areas and what are the items that are included in such common areas and facilities. But our Apartment Ownership Act is in consonance with such RERA Act? That is a bigger question. Because आपने enforce कर दिया, impose कर दिया RERA, but उस RERA की जो provisions में common facilities या areas हैं, वो उस allotted तक declare कैसे होंगे? That will be done by the Apartment Ownership Act. So unless your Apartment Ownership Act will be in consonance with the RERA Act, the ultimate goal will not be achieved, which is benefit or clarity to the end customer. That is not to happen. So we obviously need some reforms in Apartment Ownership Act. I have listed out some of the reforms that I think may be included whenever a new Apartment Ownership Act comes into place in the state. The first one is inclusion of plotted development for residential commercial purposes. As of now, we only have this the jurisdiction area of this Apartment Ownership Act only deals with the non-plotted projects. But the common areas and the facilities are obviously will be given in the plotted development also. So why not to include such plotted development for residential or commercial purposes under the ambit of that act? So all types of real estate projects, let it be plotted or non-plotted, should be under the ambit of this act. Then definitions to be aligned with RERA and introduction of new definitions. As we just talked, the definitions have been very in detailed manner. They have now been cited in the RERA Act. But until unless those definitions come into the Apartment Ownership Act, it will not be the part of the declaration that the builder is going to make to the allottees.
So the allottee will not be benefited unless such definitions and the provisions of RERA are aligned with the Apartment Ownership Act. Then the third is, it should have a formula for calculating percentage interest of undivided interest, maintenance and voting share. So if I have 100 plots in a colony or 100 units in a colony, and a fellow person has only a one plot, so will I be having 100 votes instead of one that he is having? So that formula has to be there, so that no one has so that the impartiality can be ruled out. So as per RERA, for voting there is one vote for each apartment owner or plot owner. Then the fourth one is dedicated dispute resolution mechanism for disputes arising from the contravention of this act. So there is established educating authority and appellate tribunal for the dispute resolution, HERA and HERAD. Then there should be a concept of federation, because now we have large real estate projects. So we may have a association of apartment owners for, let's say, one tower, and if there is a large project and you have 10 such towers, so those 10 towers can combinedly make a federation, and that federation can take over the maintenance and management of such common areas which are affecting the residents of the whole colony, all the residents of that colony. Then structural audit, as in the recent times we have seen, there are instances wherein it has been observed that the structural quality or the structural design of that building was not up to the mark, because of which some disasters have happened. Now, to ensure that such instances do not repeat themselves, it should be ensured that the quality of construction should be up to mark by mandating structural audits of the projects in the Apartment Ownership Act itself. The association of the unit owners shall or should cause structural audit of the building in a repeated timely manner, and that manner should be specified in the Act itself. Then the redevelopment of the dilapidated buildings. There should also be a provision for the redevelopment of the dilapidated buildings. So every commodity has a particular life, and once that life ends, it will not be safe to habitate, right? So to ensure that such situation should be taken care of, we should have a provision for redevelopment also. Then a lot of times apartment owners are ready to form an association, or they form an association and they are ready to take over the management and maintenance of such common areas and facilities, but the promoter does not allow, or the promoter does not transfer the conveyance in favor of such allottees. So there should be a provision of deemed conveyance also. In case the promoter is not cooperating with a legitimate apartment ownership association, it should be considered as a deemed conveyance. Then there should be technology should also be a part of the system. So online system and registration number should be generated, but we need a provision of such exercise in the Act itself, because without that it cannot happen. Then de-recognizing and dissolving associations. When we were talking about the apartment ownership association of apartment owners, in that section we we learned that they should be taking over the management of and maintenance of common areas and facilities. But in case it is not a legitimate association, or it is not performing as per the provisions of the Act, then there should also be a provision for de-recognizing and dissolving such obsolete associations. So if we incorporate such reforms in the any future apartment ownership act that will come into the state, there can be a greater protection of the rights of the allottees, because the dreams that are sold to them should reflect in the delivery of the project. So if we have provisions to ensure that, that might happen. It will also impact the promoters and the government itself, because if such gaps are plugged in the existing act or a new act comes,
then the execution of the project will be better, and it will be as per the terms and conditions of the license or any approval. We also have RERA in place. Now, instead of establishing a new authority for dispute resolution, a new wing of in the RERA itself should be created, which will be responsible for resolution of disputes which arise in relation to this particular apartment ownership act. So I hope the presentation was short and sweet. If anyone has any questions. Thank you, Rajat. Thank you very much. Any observations, any questions? As of now, registrar is doing that, but obviously we yeah. So when I was talking about the impact, so we are proposing if such reforms are incorporated in the Act, there is a possibility that there will be a reduction in the formation of housing cooperating societies itself. So if such housing cooperative societies will be reduced in number, then there will be not much meaning to have two authorities, one the registrar of societies and then the other authority. So it should have only one authority in future. जी मैं तीन चीज़ें आपकी जो है की शेप में थी रिकमेंडेशन की शेप में थी उनमें ऐड कर देना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड बड़ा अच्छा एम्बिट लिया है आपने. इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट की, क्योंकि ये एक्ट फ्यूचर का चैलेंज है. अब मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, इवन प्लॉट्स की भी 4 स्टोरी बन रहे हैं, तो चैलेंजेस एमर्ज कर रहे हैं एंड दिस एक्ट इज द आंसर. तो एक तो आपका कंसर्न ये था कि ये कॉन्फ्लिक्ट में रेरा एक्ट में आ रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन, वो आपने ठीक कहा कि अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ही करना पड़ेगा. वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस बता दूं जनरल जानकारी के लिए कि जो दोनों में जब किसी भी दो एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो द एक्ट विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट विल हैव ए प्रेसिडेंस ओवर द एक्ट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. बट इन केस देयर आर टू एक्ट्स व्हिच बोथ आर पास्ड बाय पार्लियामेंट, देन व्हाट इज द सिचुएशन. तो अब जैसे हमारा एक्ट है आईपीसी एक्ट है जिसमें ये एनसीएलटी में जा रही कंपनी, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कौन सा एक्ट प्रीवेल करेगा? तो द एक्ट व्हिच हैज बीन पास लेटर विल प्रीवेल. ठीक है, तो ये 85 का एक्ट है, हमारा 16 का है और पार्लियामेंट का है, तो दैट विल प्रीवेल. तो कॉन्फ्लिक्टिंग जो है उसमें वो आप रिलीज सीख कर सकते हैं. दूसरा एक बड़ा अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन थी और कंसर्न था कि जी एक अपार्टमेंट किसी आदमी के पास 100 हैं तो उसके 100 वोट नहीं होने चाहिए. रेरा ने इस चीज को आंसर किया है. तो जब हम 2/3 कंसेंट के लिए इंसिडेंट करते हैं तो यूनिक अलॉटीज से करते हैं. किसी के 10 हैं तो उसका एक ही वोट काउंट होएगा. तो यूनिक अलॉटीज विल बी काउंटेड, नॉट दैट आंसर इज देयर. और कॉन्फ्लिक्ट हुए तो हमारा वाला प्रीवेल करेगा. तीसरा एक था आपका जो लास्ट में आपने बात की, सॉरी आई फॉरगॉटन, लास्ट में शायद आप कह रहे थे कॉन्फेडरेशन कॉमन एरियाज का कह रहे थे. कॉमन एरियाज का यस, दीज आर द इश्यूज व्हिच हैव टू बी एड्रेस्ड. और ये बड़ा आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा क्योंकि कॉमन एरियाज जो है ना वो खाली ये नहीं है कि कॉमन एरिया क्लब और फैसिलिटीज और ये होगी, लैंड में भी शेयर है. सबसे बड़ा चैलेंज उसमें है कि वो कैसे अपोर्शन होएगा कि बिल्डिंग जो आज बनाया है अपार्टमेंट उसकी अल्टीमेटली लाइफ है 100 साल हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा 80 साल. वैसे तो जिस ढंग से बन रही है 100 क्या 50 चलते हैं तो भी बड़ी बात है. हम सब ये सोच के नक्शे पास कर देते हैं इतने में तो टक लूंगा. So anyway, the issue is कि what happens after 50 years or 100 years when the building has to go or by some natural calamity or they may decide themselves. जो कि बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, रीडेवलपमेंट की जरूरत है. अब कई प्रपोजल्स आ रहे हैं कि जिसको पूरी को तोड़ के अब FAR TOD ये सब आ गया तो why not to away. So उसकी लाइफ है अभी बिल्डिंग की, they want to redevelop. तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए लैंड का जो अपोर्शनमेंट है ना वो उनमें डिसाइड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में जो है ना वो कभी से नहीं चढ़ेगा. वेल डन, थैंक यू. मेरा कंसर्न था
इसमें सेक्शन 3(3) कहता है कि जो बिल्डर है वो कंप्लीशन के बाद 3 साल तक और 5 साल तक कॉलोनी मेंटेन करेगा। हालांकि वो ये कहता है कि सर्विसेज मेंटेन करेगा और ये कहता है कि कॉमन एरियाज ट्रांसफर करेंगे एसोसिएशन के बाद पोस्ट के बाद। बात तो क्लियर है, परंतु उसमें एक्चुअल में ऑन ग्राउंड इसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो जो एसोसिएशन है वो कहती है कि सारा ही कॉलोनी वाले को हैंड ओवर कर दो। इस बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि जबकि उसने हैंड ओवर कॉमन सर्विसेज मेंटेनेंस ऑफ कॉमन एरियाज करना है, ना कि सर्विसेज करनी है। सर्विसेज को वो 5 साल तक मेंटेन करेगा आफ्टर कंप्लीशन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये हमने ना पहले जो एक कॉन्क्लेव हुआ था उसमें भी ये करा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने रिजॉल्व करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सबको पता है और उसकी रेजोल्यूशन की तरफ भी हो रहा है, मतलब हो जाएगा वो भी। दूसरा ये है कि जो गोयल साहब कह रहे थे अभी, मेन इशू जो आ रहा है अभी वो ये आ रहा है कि जो लैंड है कॉमन एरियाज की उसकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो। आज की डेट में क्या है कि कॉमन एरियाज की ओनरशिप फॉर ऑल टाइम टू कम वो बिल्डर के पास ही रह जाती है, वो ट्रांसफर ही नहीं करता, क्योंकि उसने जो आपकी रजिस्ट्री कराई है वो सिर्फ उस फ्लैट की कराई है और उसमें जो टावर में आपका कॉमन एरिया उसकी कराई है। बाकी एरिया जो कोई पार्क है या कोई और चीज है वो रही जाती है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी पीछे एफडीसी मीटिंग हुई थी सर, सिर्फ ग्रुप हाउसिंग में ही नहीं सभी लाइसेंस कॉलोनीज में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है जमाबंदी है उसमें तो बिल्डर ही खड़ा रहता है हमेशा से, डेवलपर ही। वहां तो प्लॉट शो ही नहीं होते कि भाई सर बेची दी है, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो चुकी, वो मन माने लोन ही ले ले उस पे जी बेचने के बाद भी। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पे लोन उठा ले मॉर्गेज करके जी, जमाबंदी तो उसके नाम खड़ी है। तो ये इशू वहां भी रेज हुआ था कि इस दैट रेवेन्यू रिकॉर्ड शुड बी रिप्लेस्ड विद द लाइसेंस्ड कॉलोनी रिकॉर्ड, that there should be plotted development if there is plotted, then plot should be reflected in the revenue record, or that in group housing that group housing should be reflected, गांव में इस चीज को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं हम। रजिस्ट्रेशन से पहले उसको एंट्री करवाते हैं कि इसका लाइसेंस हो गया। रेड वो तो रेड एंट्री तो होगी टू दैट एक्सटेंट की ये लाइसेंस, परंतु उसमें मालिक तो नहीं आएगा जी जो अलॉट की है। नहीं वो तो कटे सर, वो तकीमा ना कटे तो कम से कम ये जो बात आप सर कह रहे हो कि वो मालिक बनेगा, जब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं आएगा तब तक वो मालिक नहीं बनेगा। तकीमा काटने की कुछ नहीं होता। सर छोटा सा क्लैरिफिकेशन जो सर आपने रेज किया था शुरू में कि उसकी रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा। सर आज की डेट में तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ही सारा काम चल रहा है। अब वो होता क्या है कि कोई स्पोर्ट्स की सोसाइटी है, कोई कल्चरल सोसाइटी है, मतलब हर तरह की सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी, हर चीज वहीं पे जाता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, वो सेंसिटाइज नहीं होता कि जो RWAs के सोल्यूशन की प्रॉब्लम्स बिल्कुल यूनिक होती हैं, ज़्यादा गंभीर होती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट वी आर प्रपोजिंग अंडर द न्यू एक्ट इज कि इसकी जो RWAs की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के अंडर होगी और इसके अंडर सारी वो वहां से खत्म हो जाएगा। उसकी एंटायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बाकी सोसाइटीज को हटा के इसकी अलग हो जाएगा। तो ये सारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसकी रजिस्ट्रेशन, हर चीज यहाँ पे होगी। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, वो कंसर्न एड्रेस्ड है फर्स्ट पॉइंट में ही। दूसरा जो हम डीम्ड कन्वेंस की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 20 एकड़ की कॉलोनी है ग्रुप हाउसिंग, यदि 20 साल पहले भी हमने उसका कंप्लीशन दिया हुआ है तो आज भी वो जमीन कॉलोनाइजर, मतलब इससे ज्यादा गड़बड़ चीज नहीं हो सकता। आज भी कोई यदि इंटेंशनल उसको कुछ गड़बड़ करना चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो दैट्स व्हाई ये प्रोविजन ऑफ डीम्ड कन्वेंस कि जिस दिन कंप्लीशन हो गई, RWA के पास हाथ में आ गया प्रोजेक्ट एंटायर, उस दिन यदि कॉलोनाइजर कोऑपरेट नहीं भी कर रहा है तो यूनिलेटरली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट विल इनेबल कि RWA के नाम पे पूरी जमीन की कन्वेंस हो जाए इन ऑल, मतलब एक इंच भी जगह ना रहे, तो कंप्लीट एरियाज जो कि कॉलोनी का पार्ट है उसकी डीम्ड कन्वेंस हो जाए। तो किसी एक छोटा सा बना ही रहे हैं तो जब कन्वेंस होगी तो एक बड़ा इशू आएगा। मैंने अपार्टमेंट के पैसे दिए, उसके प्रोपोर्शनेटली कॉमन एरिया सबके दिए हैं, वो अलग हैं, मतलब वो अलग से नहीं है, मतलब अलग से रिवील्ड नहीं है।
अब कॉमन एरिया की जब कन्वेंस होएगी तो रजिस्ट्रार स्टैंप ड्यूटी मांगेगा, वो विल बियर दैट। सर वो वही है, तो ये जो है ये डीम्ड कन्वेंस होगी जिसमें कोई स्टैंप ड्यूटी इन सभी चीजों से इसलिए आप इसको डीओडी में ही डाल सकते हैं कि इसका ओनर अब ये है, और क्योंकि डीओडी भी रजिस्टर होती है। डीओडी 10 टावर हैं तो 10 बार डीओडी बनता है, तो डीओडी के स्टेज पे ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब कंप्लीट हो जाए, और अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ये भी कहता है कि डीओडी एक बार बन गया तो 100% कंसेंट चाहिए उसकी अमेंडमेंट के लिए। तो इफेक्टिवली 10 डीओडी बनते हैं आज की डेट में, यदि 10 टावर हैं तो। और यदि हम देखें कि 20 एकड़ की कॉलोनी है, उसमें 10 टावर हैं, तो जो डीओडी में जमीन आएगी वो केवल उस टावर के नीचे की जमीन आएगी, जो 2 एकड़ भी नहीं होगा। तो 18 एकड़ किसी भी डीओडी का पार्ट नहीं होगा। तो उसी के लिए पहले हमें फेडरेशन चाहिए कि ये जो 10 डीओडी से 10 एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उसका फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनरशिप ओनर्स एसोसिएशन, जिसमें कंप्लीट 20 एकड़ की का लैंड आ गया, और देन उस फेडरेशन के नाम पे एब्सोल्युटली, तो वो जो कॉमन एरिया वो सब जो डीओडी में चल रहा है वो चलता रहे, बट जमीन इसके नाम पे आ गया, ताकि कल को यदि वो रीडेवलपमेंट करना चाहे तो इन वन गो इट कैन। Any other observation, question? Otherwise we conclude it. There are no questions, so I thank Goel Saab, Rajat and Yajanji for making such nice presentation, and we have very lively discussion. In fact, जो सेमिनार या वर्कशॉप करते हैं उसका पर्पज ही ये है कि जो डिफरेंट माइंड्स हैं उनके उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको रेज किया जाए और उसके ऊपर डेलिब्रेशंस की जाए, ताकि कोई कॉमन एक solutions की तरफ हम जा सकें। Thank you everyone for patience hearing. Thank you. Let's have a round of applause for our session chairperson also. Before concluding this workshop, I would like to thank Shri V.K. Goyal ji for such a wonderful presentation. I also thank Shri Rajat Chauhan for the presentation. And yourself. And yourself. At last but not least, I thank the wonderful audience who have came in person. So let's have a round of applause for all of us. Thank you so much. As you already know that this workshop is going to be followed by the annual general meeting for the year 2024. But before that, let us have tea, which will be served just behind the auditorium. So let's have tea, and we will try to meet after 15 minutes here itself. Thank you so much.
अभी चल रहा है क्या आपका? चल रहा है तो उसका वो एक्चुअली बंद नहीं कर सकते ना, बंद करते हैं तो बंद हो जाएगा। ऑडियो तो बंद हो सकता है। आप वो ना सारे को एजेंडा खोल देना, एजेंडा भेज रखा है ना इसमें, जूम के साथ में वो एजेंडा, जूम मतलब स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ आदमी करा दो अमित, स्क्रीन शेयर करा दो, पीडीएफ खोल दो, जितने भी हमारे पीडीएफ्स है ना सारे खोल दो। आगे पास कर दो यार, तुम बोलो बोले जाओ फटाफट। Good afternoon everyone, I am Yasin Chaudhary, Assistant Town Planner. Currently I am posted in Headquarters. Good afternoon, I am Nadeem Akhtar. I am member Hera, Panchkula. Earlier I was Chief Town Planner Huda. I did my planning from SPA Delhi and then retired in 2022. And my batchmate Mr. Goya. Both of us are from SPA Delhi. 88, he did a URP 86-88. So I joined department on January 1st January 89. Retired in October 2020. पीपी सिंह जी मेरे को बिठा के वो हाई कोर्ट की तरफ ले गए थे, इंटरव्यू था जिस दिन रेरा मेंबर के लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया। सो नाउ आई एम मेंबर रेरा गुरुग्राम सिंस मार्च 2021 and left with just slightly less than 2 years. Thank you. I am G.S. Reddu. I passed out from Amritsar School of Planning. I have done my master. Earlier I had done my master from Punjab University, master in geography. I was joined the department on June 1983, and I remained in the department up to 31st of January 2016. And I retired as Chief Town Planner. मैं क्यों उधर नहीं आ रहा था, हिंदी में ठीक है। बीपी सिंह को हेलो, आई एम देवेंद्र निम्बोकर. I am Chief Coordinator Planner NCR Haryana. I joined department in June 1997. Thank you. सबसे पहले सभी को नमस्कार. I am Subhash Goyal, STP retired from government of Rajasthan. आज का जो है स्पर्श हॉस्पिटल का आई एम ए प्रमोटर, अम्बाला सिटी में न्यूली बॉर्न बच्चों का जो है इस स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिस्ट. वेरी नाइस. हाँ, इसके अंदर मेरा सबसे ये निवेदन है, अगर हमारे लाइफ को इश्यू हो है ना, पहली बात तो भी किसी को जरूरत ना पड़े. आई विश फॉर दैट. पहली बात की जरूरत ना पड़े, अगर इन केस तो मोस्ट वेलकम. तो ये मेरा मेरे को भी ऐसे सब जानते हो. अब नहीं यार, हितेश शर्मा STP Satish Punia, STP Panchkula. I have joined in the year 2000. Myself Vijay Kumar, done Master of Regional Planning from SPA in 2000 and joined the department in 2002 and presently posted as STP NCR Cell Haryana. Good afternoon everyone. My name is Jadip. I am working as District Town Planner in Office of CCP NCR. I passed out from School of Planning Amritsar in 2010 and joined in the department in 2018.
आगे 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 आते रहे। I am Lalit. Pass out from SPA 2000 forward. and thereafter I am in department. बाकी जो नए बच्चे हैं वो आगे आगे बता दीजिए हमें। So I am Savita Jindal. As now I am DTP headquarter. I joined department in 2010. Thank you. Good afternoon everyone. I am Naina, working at the headquarter. Good afternoon everybody. I am Vidya Gupta. I am an architect urban planner from CCA at SPA Delhi, and currently I am posted as DTP headquarter at CCA. Myself, Satish Kumar, I am working as ATP in Justified Panchkula. I am passed out from GRDC program. राकेश बंसल, ATP पंचकुला। वो पीछे से आप यंगस्टर्स प्लीज आगे आगे कर देंगे। Good afternoon everyone. I am Neha Yadav, Assistant Town Planner, and I joined this department in 2018. आगे दे दो, आगे आ जाओ प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम रमनीक है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन SPNIT सूरत से किया है और 2020 में मैंने इस डिपार्टमेंट को एज असिस्टेंट टाउन प्लानर ज्वाइन किया और अभी हेडक्वार्टर में प्रेजेंट ATP वर्क कर रहा हूँ। सब नए बच्चों के लिए ताली जरूर बजा दें। Good afternoon everybody. I am Gurleen Kaur, Planning Officer, and I have completed my Masters from SPA Bhopal, and I have done civil engineering. Currently, I am working in urban reforms. Good afternoon everyone. Myself Giriraj Sharma. I have done my masters from IIT Roorkee. Currently I am working in drawing branch in Town and Country Planning Headquarters, Tanjore. Thank you. Good afternoon everyone. Myself Harneet Kaur. I am an architect and urban planner by profession. I did my masters from NIT Jaipur and currently I am engaged in Department of Archaeology and Museums, Haryana. Namaskar everyone. This is Shubham Rao, born and brought up in Chandigarh. Then I did my B plan from University of Technology in Dehradun. Then after that I cleared out my gate, then went into SPA. Right now I'm working as a consultant to PCP, working at Mars. Beforehand I have been working with different organizations. Till date 7 or 8 organizations. I'm working as a consultant to DTC. Good afternoon everyone. I am Altu Datta and I am presently working at the urban local bodies, and presently I have been working on the EDC's external development charges, and I have completed my masters in urban planning from IIT Kharagpur. Good afternoon everyone. Myself Prashant Kumar. I am planning officer in DTCP and currently working as in joint branch DTCP. Good afternoon everybody. I am Devesh Anand. I have completed a Master of City Planning from IIT Kharagpur and did a Bachelor's of Architecture from NIT Bhopal. And I am architect planner by profession, and earlier I was working in with IT team in TCP department. Now I am engaged with the Department of Archaeology and Museum. Good afternoon everyone. My name is Ayush Arya and I have completed my bachelor's in architecture from SPA Bhopal and master's in city planning from IIT Kharagpur. And currently I am working in IT related work at the TCP. Thank you. Good morning everyone. My name is Sumit. I am from Patna. I have done my bachelor's in architecture from Jadavpur University and master's from IIT Kharagpur. Currently I am working in the office of CCP NCR. Good afternoon everyone. I am Lalit Kumar. I am planning officer and I have done Bachelor of Architecture from Aligarh Muslim University and Masters in Urban and Rural Planning from IIT Roorkee. And currently I am working under Director Sir and studying the urban sprawl in the cities of Haryana.
afternoon everyone, this is Mahima. I have done my architecture from Indira Gandhi Delhi Technical University in Masters of City Planning from IIT Kharagpur. Currently I am working as a planning officer in Office of CCP NCR sir. Thank you. Good afternoon everyone. I am Janvi Goyal. I am from Panipat. I am architect and planner by profession. I have done my masters from Indira Gandhi Delhi Technical University and currently I am working in the office of CCP NCR on Hisar Circle. एक सजेशन, ये सारे जो नए बच्चे आए हैं ये सब जो है ना हमसे बहुत फार अहेड है इन टर्म्स ऑफ मतलब स्टडी एंड अवेयरनेस और जो एक्सपोजर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे हम कोई अब इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ना तो ये यंग बच्चों को एक वो दिया जाए, इनका एक डेडिकेटेड वो सर स्टार्ट कर दिया, इसीलिए हमने बोला इस बार हम प्रेजेंट करेंगे नहीं यही करेंगे। तो लोएस्ट बैच जो था उसी तरफ से 2 प्रेजेंटेशन और उनके नए आइडियाज होंगे। हम लोग पढ़े हो गए इतने साल, थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर आप इन लोगों को जाना। बिल्कुल मैं भी वो यंग में आ गया, 3 साल की जो नौकरी हुई है। मैं 2-4 साल में पैदा होने वाला हूँ। So we start with the AGM now and चलो जी आ जाओ ललित जी। ऊपर बैठो जी। Good afternoon everyone. ज़्यादा टाइम अब लेंगे नहीं। AGM की जो रिपोर्ट है that is on the screen and I hope it's being circulated, so वो सारी डिटेल्स आप लोगों के भी पास आ जाएंगी। तो बगैर कोई और टाइम वेस्ट किए I will request our secretary Shri Lalit to present the overall report of activities for the last year. Thank you, sir. I'll start directly with the report. The election for 22nd Executive Committee of SRC for the year 2023-24 was held on 10/6/2023, wherein Shri BP Singh was elected as chairman. I was secretary and Jason was secretary. Treasurer. The other members are also there on screen and let me read. Ex-officio member Shri Sudhir Singh Chauhan, Shri Vijay Kumar, executive member Shri Devendra Nimokar, Shri Sanjay Kumar. Shri Narendra Kumar, Shri Rajat Chauhan, Parveen Garg, Ishti Sharma, Dinesh Chauhan, and auditor is Satish Kumar. The committee has convened 8 meetings during this tenure, wherein plans relating to organization of conferencing, the proposal as well as issues related to renovation, maintenance of chapter buildings have been carried out. First is working committees. The following working committees has been constituted. Number 1 is Building and Maintenance Committee, chaired by Shri Sanjay Kumar. Publication and Library Committee, chaired by Shri Nadeem Akhtar. Professional Standing Committee, chaired by Shri Devendra Nimokar. Now the activities of Building Committee. First, the committee has recommended that the renovation of the guest house of this building be carried out. In accordance with this, the deliberations has been held in various meetings of the executive committee. They have finalized the design, plans, estimates, architectural construction form, and they have submitted the recommendation to the HRC. Then digitization of chapter building.
has been done. Then regular building maintenance such as dry cleaning or these all small petty works. Then the publication in library committee. Apart from getting the diary of 2024 and which has been circulated to the members, the committee has during the organization of workshop, we have on urban heat islands, causes, effects and mitigation strategies. And the committee has also actively participated in maintenance of the library of the chapter. And professional standing committee, we have organized urban heat, workshop on urban heat islands. Then various events have been organized like Diwali, Independence Day, Republic Day. And now there is one issue that North Zone Conference is to be held. So we have to finalize whether where to organize this workshop. Apart from that, other activities. Shri PPC Chairman Akasi has been elected as council member for ITPI, New Delhi, as well as member, committee member of All India Board of Town and Country Planning by AICTP. Shri Yajan Chaudhary, Treasurer, he has been got nominated as co-chairman, and Ms. Ishti Sharma, Executive Member HRC, got nominated as member of Young Planners Forum Committee of ITPI for 2023-24. Apart from that, we have celebrated few, we have senior members of HRC, retired officer of Town and Country Planning, were conferred with Samman on 19th August 2023 during cultural program preceded by workshop on urban heat islands, causes, effects and mitigation strategies. Then celebration of Independence Day, celebration of Diwali, celebration of Republic Day. Now the management of the chapter, the overall, we have 3 accounts. The major activity which has been done is that we have recovered more than 80 lakh rupees which were pending with NHM and Haryana Medical Service Corporation. We have received donations of more than 40 lakhs, and the financial position is number 1, first general fund account. We have 27 lakh 65,934 rupees. We have second is chapter general. In general account, we have around 1 crore 75 lakhs balance in account. Cash in hand is 6,000 rupees, and FDs are of 27 lakh rupees in this account itself. Then we have chapter building. We have balance of 2 lakh 59,790 rupees, and third is account of ITPI headquarters. It has balance in account is 11 lakh 43,495 and we have FDs of 2 crore 25 lakhs in this account. So this is the total balance, and overall we have FDRs of 2 crore 52 lakhs, and balance in account is 1 crore 89 lakhs 53,621 rupees. I want to congratulate team for recovering 80 lakh from the tenant. It's really a good job. Basically, sir, क्या हुआ कि जो when we started our activities, तो उस समय से अब में जो additions हुई हैं वो वही है, 80 lakhs की recovery, और जो in addition आया 50-60 लाख, और जो इस साल का रेट वो ऑलमोस्ट इसी साल खर्च हुआ है, तो वो 80 लाख जो हमने पिछले वाले रिकवर किए, और इस साल की जो 40 लाख की डोनेशंस थी विच इवेंचुअली केम बैक, वो ओरिजिनल पहले ITPI के खाते में जाता है दिल्ली, और फिर हमारे पास वापस आता है। वो भी 40 इस साल के डोनेशंस नहीं थे, इनफैक्ट इस साल का 30 से कम था, 10-12 लाख पिछले साल और उसके पहले के डोनेशंस थे, तो वो भी we were successful in getting
back with us. वो करीब 1.25 करोड़ की ये एडिशन है इस साल के जो भी हमने इनहेरिट किया था, तो जो खर्च होने के बाद भी दिस इज एडिशन। जो एक काम हमारा रहता है कि ये सारे पैसे मोस्टली हमारे लास्ट 1-2 महीने में आए हैं, तो बिकॉज ऑफ द प्री ऑक्यूपेशन ऑफ एवरीवन वी वर नॉट एबल टू गेट एफडीज क्रिएटेड फॉर दिस। तो ये जल्दी ही 1 महीने के अंदर इसकी एफडी क्रिएट हो जाएगी, so that at least we earn proper interest on that. और जो पिछले एजीएम से डिपार्चर है इस बार ये कि हर बार एजीएम में we used to select a new team, इस बार उन्होंने जो बाईलॉज हैं उसको अमेंड कर दिए, तो अब हर एक जो ITPI काउंसिल है उसका भी टेन्योर 2 साल का हो गया और जो लोकल चैप्टर्स हैं उनकी भी टेन्योर 2 साल की हो गई। तो इस साल हमारी भी टेन्योर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बढ़ गई, तो आपको हमें 1 साल और मिलना। तो with that we come to the end of this AGM and I will request Yajent to inform everyone on agenda. अच्छा sorry. So agenda पहला है हमारा अप्रूवल हो गया रेजोल्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ HRC गुड़गांव सेंटर। सर ये कई दिनों से वी हैव बीन परसुइंग दिस क्रिएशन ऑफ गुड़गांव सेंटर, HRC गुड़गांव सेंटर। 1-2 बार अप्रूव भी हुई है, बट इस साल का जो ITPI का मेन फोकस था वो 2 अलग रीजनल सेंटर्स क्रिएट करने में था, एक अमृतसर और एक सूरत। तो दे हैव केप्ट दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर की गुड़गांव सेंटर की फंडिंग करने का, बट वी आर इन द क्यू नाउ एंड प्राइमरीली इसके लिए वी कीप पुशिंग। तो ये था कि आज की मीटिंग के रेफरेंस में वो बार बार कहते रहते हैं कि कम से कम 15-20 जो गुड़गांव के लोग हैं उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन, HRC के मेंबर्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ गुड़गांव, तो उनके सिग्नेचर के साथ एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट, वी विल बी जो लोग यहाँ पे आज की डेट में मौजूद हैं, एक तो सर गोयल साहब आपका शायद गुड़गांव का एड्रेस होगा, तो वो पंचकुला का है अभी तो। अच्छा, तो फिर व्हाट वी विल डू इज कि आज के एजीएम के कॉन्टेक्स्ट में वी विल गेट दोज सिग्नेचर्स डन फ्रॉम गुड़गांव ऑफिस, वहाँ से करा के करीब वी विल ट्राई कि कम से कम हमारे पास 30-40 सिग्नेचर्स हों एंड वी विल कीप रीइटरेटिंग आवर रेजोल्यूशन। और फंड वाइज इट शुड नॉट बी अ बिग इशू। एक और छोटी सी डेवलपमेंट है, और TCP के ऑफिस के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफिस के लिए हमारे डायरेक्टर साहब पिछले काफ़ी दिनों से इन गुड़गांव ही हैज़ बीन परसुइंग इट। तो अब लेटली एक एकड़ की साइट बिसाइड जिमखाना क्लब, जो वो लाइब्रेरी और वगैरह वगैरह के लिए साइट रिजर्व थी, उसमें 1 एकड़ का साइट डेजिग्नेटिंग इट फॉर TCP, वहाँ से फाइल चल पड़ी है एंड होपफुली इट विल गेट अप्रूव्ड वेरी सून बाय द CA हुडा। जिस दिन वो अप्रूव हो जाती है लेआउट प्लान में, उसको परस्यू करके हमने अलॉटमेंट करवाना है और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके और जल्दी कंप्लीट करना है। ये आइडिया आया था गुड़गांव से ही कि उस 1 एकड़ की साइट के साथ लगते हुए 500 स्क्वायर मीटर यदि हम HRC के लिए उसी लेआउट प्लान में रिजर्व करा लेते हैं तो मे बी दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन। और वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रेट्स, लोकेशन रेट्स। शायद नदीम सर को कुछ आइडिया हो, बट हमारा अंदाजा ये था कि यदि 50-60 हज़ार रुपए भी पर स्क्वायर यार्ड के रेट से यदि अवेलेबल हो, यदि 1 लाख हो तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है सिचुएशन, बट यदि 50-60 हज़ार के रेट पे भी मिल जाए तो पॉसिबली वी कैन मैनेज दैट और वी कैन गो अहेड विथ इट। यदि 500 स्क्वायर यार्ड भी मिल जाता है तो वी कैन हैव 3-4 फ्लोर करके, 1 फ्लोर फॉर कॉन्फ्रेंस रूम, 1 फ्लोर फॉर ऑफिसेस, 1 गेस्ट रूम के लिए और 1 किराए पे दें, ताकि किराया जो आए उससे उसकी सारी मेंटेनेंस चलती रहे। तो ये अभी स्टिल नॉट इन द फाइनल स्टेजेस, बट ये एक है। और दूसरा SPR के ऊपर 1500 गज की एक जमीन है, तो वो हुडा ऑफिस से ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी, सत्रकार सर से भी बात हो गई है, तो उस पर दे आर अग्रीएबल टू अलॉट इट फॉर
HRC सेंटर गुड़गांव सेंटर। तो कॉस्ट वाइज वर्किंग करनी है हमने कि कौन सा ज़्यादा बेटर होगा और उस पर करके वी विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट 2 to 3 months विल क्लोज दिस। आप भी कह रहे हो कि नेक्स्ट ईयर लेंगे उसमें ITPI, यानी यही 24-25 इस साल, हाँ इस 23-24 में उनका अमृतसर और सूरत था, तो वो फंडिंग ऑलमोस्ट उनकी क्लोज हो चुकी है। तो नेक्स्ट ईयर में 24-25 में हमारा रहेगा। एक ये हो जाएगा, वी विल डू दैट। एंड देन नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस का वेन्यू एंड डेट फाइनलाइजेशन की बात थी, बीच में कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इसको हम फॉलो अप नहीं कर पाए, बट वी होप टू क्लोज दिस। और ओवरऑल जनरल लोगों की राय थी, पहले एक बार हम गुड़गांव के लिए या करनाल के लिए सोच रहे थे, बट इवेंचुअली हुआ कि मैनेज हम सारे इन चीज़ों को पंचकुला में ही कर पाते हैं। तो hopefully we will do it in some place other than this place venue where we are sitting right now, क्योंकि ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लेवल के कॉन्फ्रेंस पे शायद इसके एडिक्वेट ना हो, तो मोरनी रोड पे 1-2 लोकेशंस हम लोगों ने देखी हुई है एंड we will zero down on that and decide on that within a month or so. And the last agenda was recovery of outstanding dues, about which Lalit ji has already explained. And okay, then comes replacement of chartered accountancy firm. This year we have had a very bad experience with our existing chartered accountant. मतलब कि eventually हमें ये realize हुआ कि यदि ये accounting हम खुद कर लेते तो शायद हमारी मेहनत आधी रहती, बिकॉज इतना लंबा चौड़ा बहुत कुछ हमारा अकाउंट स्टेटमेंट होता नहीं है, बट उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी। इट वॉज ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, सो वी हैव डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द सर्विसेज ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड हमने ललित जी को बेसिकली असाइन किया हुआ था टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेट, एंड ही हैज़ ऑलरेडी zeroed down on an alternate chartered accountancy firm about which he will explain. सर, हमें जो अकाउंटिंग हमारे प्रेजेंट सीए ने की है वो अभी भी इस लेवल पे नहीं है कि हम उसको सही मान पाएँ। सो बट बिकॉज इट वाज टू लेट, तो हमने कहा कि एक बार इसको फाइनल करते हैं और अगर उसको आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिवाइज करके कर सकते हैं। तो हमने अल्टरनेटिवली जो सीए अपॉइंट करने का किया है वो आज हम यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनके कोड्स हमारे पास आ गए हैं, विच आर मोर और लेस सेम विच वाज अर्लियर गिवन टू पहले वाले हाउस अप्रूव्ड। वी कैन बिल्कुल कर लो, नो एग्जीक्यूटिव में भी कर देते हैं, ये की जरूरत नहीं, फिर भी we will take it up in the next executive committee and then we'll इसी में हो गया तो तो लास्ट जो है ये इंक्रीमेंट इन रेंट है कि 7% हम कहते हैं, बट समहाउ उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो वी हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम NHM नॉट टू इंक्रीज द रेंट फॉर एटलीस्ट 5 years and thereafter the rent if increase be not more than 25% of the original rent। तो इस पे थोड़ी सी डेलिब्रेशंस की आवश्यकता है। 7% पर एनम को मतलब एवरी 11 months को लोग थोड़ा स्टीप मान रहे हैं आज की डेट की बेसिस, नॉट बाउंड बाय द चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन, बट इट्स बेसिकली ओपन फॉर डिस्कशन। और वो कह रहे हैं कि 5 साल तक इसको स्टडी रखो, जो कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट हर साल 5 एवरी ईयर इट इज 5% इंक्रीमेंट। सो बेसिकली फिर तो 7 को 5 करना है, 7 को 5 करना है। है वैसे 5%। और दूसरा एक इशू ये भी है सर कि जो हमारी बिल्डिंग अभी आधा पोर्शन अभी खाली है, उसको हमारे पास एसएस बोर्ड ने हमें अप्रोच किया, उसके अलावा फायर के जो ऑफिस है उन्होंने हमें अप्रोच किया, लेकिन हर जगह उनको इशू ये आ रहा है कि जो इसके रेट्स हैं वो जो PWD DNR ने जो रेट फिक्स कर रखे हैं हम उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, जो कि बहुत कम है, जिसके कारण हम इसको रेंट पे नहीं दे पा रहे हैं। सो वो भी एक इशू है कि उसको हम कैसे, हमें उसको कैसे हैंडल करना है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि
मार्केट रेट पे है सर, लेकिन वो NHM है लेवल 4 CO जब आप इसको उस पे दोगे तो सर, PWD रेट्स पे दोगे ना, बिल्कुल ठीक बात है सर। PWD रेट्स पे तो जाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उससे बढ़िया वो इतनी एबिस्मली लो है कि उसके बजाय हम खाली रखें तो शायद ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अदरवाइज उसमें जितनी मेंटेनेंस की हमारी कॉस्ट बढ़ेंगी शायद वही उससे मतलब उतना कोई उसका फायदा नहीं है। तो वी विल वेट। बेसिकली ये इन्फॉर्म करना था AGM में कि हड़बड़ी में किसी को कम रेट पे देने का कोई तुक नहीं बनता। और एज एन ऑल्टरनेट एक बार हमने ये भी सोचा था कि DTP पंचकुला ऑफिस जो है वो वहाँ पे उनका जो ऑफिस है वो काफ़ी शैबी सिचुएशन में है, बट यदि ये मुद्दा आ रहा है PWD रेट वाला तो वो वहाँ पे भी आएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वहाँ जाके फिर से अटक जाएगा। तो अब ये NHM क्योंकि मिशन है, ये भारत सरकार का मिशन है, वहाँ से फंडेड है, तो इनके साथ वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पे चल जाता है। तो वी विल कीप ट्राइंग फॉर एनी सच ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, जो भी होता है वी विल करेंगे। सर इसमें मैंने पता जब ये करा था, चलिए एक मिनट प्लीज। इसमें एक और बड़ा ये सर कि जो डॉक्टर आदित्य दहिया जो IAS हैं, NHM के डायरेक्टर हैं, वो इस अप्रूवल की जो लाइन है उसका ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। NHM में उन्होंने इसी रेट पे लिया हुआ है। जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला तो मैंने कहा कि सर आप अलग रेट पे ना कीजिए, लेकिन जिस रेट पे आपने ले रखा है उस रेट पे अप्रूव कर दीजिए, सो दैट कि SS बोर्ड जो इस बिल्डिंग को लेने की बात कर रहा था उसको अप्रूव कर पाए। लेकिन समहाउ उन्होंने अपने लिए तो ये 5% वाला प्रपोजल भेजते हुए अप्रूव कर दिया, क्योंकि मिशन है इसलिए शायद एग्री कर लिया। लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे लेने की बात हो रही है वहाँ पे ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के इसको रोक लिया। सर मैं ये कहना चाह रहा था, हरियाणा सीड कॉर्पोरेशन का सेम इसी लेवल ऑफिस है, वो क्राइम FD ने ले रखा है और FD ने इसी रेट पे ले रखा है। FD का किस रेट पे ले रखा है? ये जो NHM हमारे को दे रहा है उस रेट 59 पर वो इंक्रीज हो गया 70 कुछ पे है। हरियाणा लोकल ऑडिट का ऑफिस है जो कि FD का ही ऑफिस है। उसकी तो बेसिकली हम भी वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, तो हम भी वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम PWD रेट पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो हमारी एग्जिस्टिंग रेट है वो या उससे बेटर रेट जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम हमारा खाली रहे, डजंट मैटर। ठीक है। बट इसको एक्सप्लोर करने के लिए में भी हमें थोड़ा फिर और वो करना पड़ेगा कि क्योंकि यदि कोई और उस रेट पे लेना चाहता है तो वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसमें भी ऐड दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो और किसी का भी कोई एजेंडा हो तो वी कैन टेक दैट अप राइट नाउ। पब्लिकेशन शुड बी कंटिन्यू, जो हम पहले निकाल सर 2 मुद्दे हैं, पब्लिकेशन भी है और प्लस यहाँ पे जो हमारी पहले एक रिसर्च एसोसिएट रखते थे और कुछ हमारी एक्टिविटीज चलती थी वो जो आज की डेट में बंद पड़ी हैं, तो वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हमारी धीमी हुई हैं बिकॉज हम सारे फंसे रहते हैं समाजों के काम में, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे यदि 2-3 लोग हम यहाँ पे रख सकें एंड फाइनेंशियली हमारी कंफर्टेबल पोजीशन है, वी कैन डेफिनेटली अफोर्ड दैट। तो एक सर मेरी बात हो रही थी जीत कुमार गुप्ता जी से, वो आज की डेट में फ्री है, वो बोल रहे हैं कि जी 2 बंदे आप रखो तो उनको गाइड करके और उनसे इस तरह के जो रिसर्च पेपर्स यदि करवाने हैं तो ही इज विलिंग टू ज्वाइन। तो कैन वी गो अहेड विद दैट बिकॉज वो ठीक है, अभी तक वो सिंस ही हैज रीच्ड 675 इयर्स ऑफ एज, तो पहले वो किसी एक दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे थे और वो 75 के बाद शायद आप फॉर्मली कहीं पे भी इस तरह से काम नहीं कर सकते, तो ही इज फ्री नाउ एंड ही इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट। तो एक वो भी ऑप्शन है उनको एसोसिएट करके और ये स्कॉलरली पर्सन। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ, तो कुछ तो एटलीस्ट आज की डेट में जो हमारा सारा बंद पड़ा हुआ है प्रोफेशनल एक्टिविटीज, दैट विल गेट सम अमाउंट ऑफ इसको एक्टिवेट किया जाना वी कैन स्टार्ट। तो
प्लानिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सभी के पास व्हीकल्स होंगी तो यू कैन जस्ट पाइल ऑन उबर और ओला के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होके और सारे इकट्ठे चलेंगे, ठीक है? और लेके जा रहे हैं जी वो हेलो, लंच जो है हमारा इट विल बी सर्व्ड इन होटल वेस्टर्न कोर्ट पंचकुला सेक्टर 10. So we opposite bus stand. So we request you all to please join us for lunch. Thank you. Thank you. well done. आ जाओ फटाफट सारे पीछे आ जाओ, फोटो कर लो। आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, सभी आ जाओ, ऑल प्लानिंग ऑफिसर्स ऊपर आ जाओ, हाइट के हिसाब से आ जाए। छोटे लोग आगे खड़े हो सकते हैं, आप लोग आ जाओ। ये ना तो ऊपर जा रहे हैं। पहला नंबर हमारा है। Wait. Thank you, sir. Thank you. Thanks everyone for coming. जितने लोग यहाँ पे आए। भैया